चलिए, रमज़ान भी बस करीब लग गया है, लास्ट वीक शुरू हो गया। चलें, कैसा जा रहा है कोर्स? अच्छा है सर। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्तेदारों पर खर्च करने में दोहरा फ़ायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आम गरीब पर सदका करने में सिर्फ सदका का सवाब मिलता है और रिश्तेदारों पर सदका करने में सदका और सिला रहमी दो चीज़ों का सवाब मिलता है। तो सदका करने का महीना है और इसमें अपने रिश्तेदारों को मत भूलें। जितना इस महीने में खर्च कर सकते हैं ज़रूर करें, दूसरों को भी तरगीब दें, खुद भी खर्च करें। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। Okay ji, so today we are going to start a new topic, that is software design patterns. The previous two lectures were setting the stage for these lectures, and in this again we are going to see various aspects of software design, and we are going to discuss few important patterns along with a case study, so that understanding of the patterns should be easy for you, and the intent and the theme behind the design patterns should also be clear to you. This is lecture 1 for design patterns. Let's see how we are going to cover various parts of this lecture. First of all, the motivation, then classifications of design patterns, then benefits of design patterns, then main topic of this lecture, that is case study, that is with the name of Simu Duck, and finally we are going to see the formal definition and structure of strategy design pattern. So first of all, just for your information, that there are two very famous books on design patterns. The first one on the left side, that is Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, and it is written by four authors: Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Willis-D. And these are also known as Gang of Four, and the book is sometimes also known as Gang of Four book on design patterns. They were the pioneer of this book. From this book, the term design pattern got popularity,
and later on a book on software architecture design patterns, volume 1 was published, and the authors are different, but it is volume 1. And again, this book got tremendous popularity. The name of this book is Pattern Oriented Software Architecture, a system of patterns. So, in these design pattern books, we are going to primarily focus on patterns of software design patterns. In fact, this book covers patterns with the examples of C++. This book covers all the patterns. There are 23 patterns. They cover, I will give examples of C++, but we are going to follow another book that is based on that I'm going to mention later on. But let's first of all discuss how they have structured the design pattern book, that is Gang of Four book. So as you can see that the Gang of Four design patterns, they structure their patterns in three categories. One is creational design patterns, then structural design patterns, and behavior design patterns. And some of the patterns are based on class scope, and most of these are based on object scope. So this is the listing of these patterns. So the creational design pattern includes factory method, abstract factory, builder, prototype, and singleton. And in structural design patterns, we have adapter pattern, class scope adapter pattern, and object scope adapter pattern. Then bridge, composite, decorator, facade, flyweight, proxy. Then in behavior design patterns, we have interpreter, template method, chain of responsibility, command, iterator, mediator, memento, observer, state, strategy, and visitors. So we will just cover 4 to 5 design patterns, but we will discuss it thoroughly so that the foundational concepts uh, should be can be covered, and inshallah you will have solid foundation. Based on those foundations, it will be easier for you to go through the other patterns at your own. So this is the basic intent, that we should take few patterns and we should have thorough treatment on those patterns. So we can say that if we try to do purpose-based classification, then we can have 3 categories or 3 classification: creational, structural, and behavior. The creational category, the patterns of creational category are concerns with creation process of objects and classes. So primarily they are going to focus how we can create objects or classes, or what are the best practices those should be used for creating objects and classes. Then the second category is structural. This structural category patterns focus on composition of classes and objects. That what are the best practices that we should compose classes and objects so that later on they can help in
a good design. And the third one is the behavioral category. This category, these patterns categorize interaction and responsibility of objects and classes. Point is that how what are the best practices for interaction of objects or classes, or how we should assign responsibilities to objects or classes. Then we can also have scope-based classification, as you saw in the previous diagram. One is class scope classification, which the class scope patterns cover the relationship aspects of classes or subclasses, whereas object scope patterns cover that how we can manipulate the objects at runtime. So with this, the major catalog items pertain to object scope. As you have seen, most of these design patterns cover that how we should manipulate the objects. Most of these are covering the object scope. So, what is the power of shared pattern vocabulary? As we discussed this aspect in our grasp principles as well, that if as a team, you are familiar with a shared vocabulary as a web developer, then you can better communicate with each other, and you can better train your new developers or new members of your team. So that is a very important aspect of creating a shared vocabulary, and patterns help us to create a shared vocabulary. Talking at pattern level allows you to stay in the design longer. और आप जितना डिज़ाइन में रहेंगे उतना, अगर डिज़ाइन फेज में आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना रिफाइंड एप्लीकेशन आप बना सकेंगे. And a shared vocabulary can turbocharge your development team, and shared vocabulary encourage more junior developers to get up to the speed. So with this basic backgrounder information, again this is also background information that these are some tools for design toolbox. Firstly, you should know the basics of object orientation, and then there are certain principles those you should know. The basics of object orientations are abstraction, encapsulation, polymorphism, and inheritance. And we assume that you know the object-oriented basics of using classes polymorphically, how inheritance is like design by contract, and how encapsulation works. So I'll just briefly explain it in next slide as well. On the other hand, you should also should know object-oriented principles. For example, some of the principles are encapsulate what varies, favor composition over inheritance, program to interfaces, not implementation.
So we are going to focus on the principles primarily. We will be taking a closer look at these down the road and also adding few more to the list. So in this lecture, we are going to refresh the knowledge of object-oriented basics, as well as we are going to cover these three principles in this lectures as we will move in our case study. We are going to discuss these principles and what is the concepts behind these principles. Okay, so let's see the basics. Just a refresher for you. First of all, inheritance. Inheritance can be defined as a process where one object acquires properties of another. So, inheritance makes the information manageable in hierarchical order. So, actually, what happens? The sub classes acquire the properties of their parent classes. So, this is inheritance. It happens in humans and other animals as well. Second concept is of polymorphism. We also discussed this concept in grasp principles as well. So polymorphism is the ability of an object to take many forms. The most common use of polymorphism in object-oriented programming occurs when a parent class reference is used to refer to the different child class objects. So we are going to see this polymorphism in action in today's lecture as well. Then is the concept of encapsulation. Encapsulation is the technique of making fields in class private and providing access to these fields via public method. So what we do, we encapsulate some information in classes and we give them a controlled access to our outside world. Then it is abstraction. It is process of hiding the implementation details from the user, often by using abstract classes or interfaces. Again, we are going to strengthen these basics along with the principles in today's lecture. Overriding. Overriding means to override the functionality of existing method, often a superclass. The benefits of overriding is the ability to define a behavior that's specific to the subclass type. ओके इसको मैं अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, लेकिन आगे हम डिटेल में डिस्कशन हम शुरू हो जाएगी हमारी. So I'm not asking any question on this slide because we are going to discuss and see these basics in action in coming slides. So for this, this information has been picked from the Blow reference from tutorial point. You can have these, I think I encourage you to go to this link and see all these definitions with examples from this link. So let's start from a quote
of a design guru. You can see design guru is in meditation and is thinking about some ideas. And the idea of the design guru is that we should remember knowing concepts like abstraction, inheritance, and polymorphism do not make you a good object-oriented designer. So, as you have understood in your bachelor level courses, but this understanding is not sufficient. Understanding of abstraction, understanding of inheritance, understanding of polymorphism. This understanding can make you a good programmer, but it cannot make you a good designer. So a design guru thinks about how to create flexible designs. So this is important that a design guru thinks that how we can create a flexible design that are maintainable. Once we say maintainable, it means that once those software has been deployed and these softwares are being used, that period is called maintenance period of software. So how we can create such software designs which can be easily maintained after those have been deployed and after those have been used. And those designs which can cope with the change. So if there is change request from a user, then we can you should be able to incorporate those changes in design of the software. So a good designer thinks long term. Good designer makes a design in such a way, keeping in view the maintenance aspects of the software. Okay, so we are going to see these principles with the help of a case study, and the name of case study is Simuduck, and we are going to follow the book Head First Design Patterns. And in this, we are going to start with a case study of Simuduck. Now, what are the objectives of this case study? We are going to go through a simple application design. We will see the problems of inflexible design as the new requirements emerge. Then we will see how improvements are made based on some fundamental design principles. Okay, so let's start with the case study. First of all, some background information about the case study. Joe works for a company that makes a highly successful duck pond simulation game known as Simuduck. The game can show a large variety of duck species swimming and making quacking sounds. The initial design of the system used standard object-oriented techniques and created one duck superclass from which all duck types
inherit. तो इस कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को जिसने बैचलर किया हुआ था उसको हायर किया. ही वॉज गुड इन प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके बाएं हाथ का काम था. Once he was hired, तो he knew the advantages of inheritance कि कैसे हम inheritance से के जरिए हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. सो ही मेड स्ट्रक्चर, और जो उसने स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर उसने इस तरह का बनाया कि उसने एक सुपर क्लास बनाई, और सुपर क्लास में कुछ मेथड्स भी बनाए, बट द सिग्निफिकेंट मेथड्स वर क्वैक मेथड, स्विम मेथड एंड डिस्प्ले मेथड. और अब जो मेथड उसने इस तरह बनाया, उसकी कोशिश ये थी कि जितने मेथड्स जो कॉमन मेथड्स हैं, जो कॉमन फंक्शनैलिटी है सारी डक्स की, उसको वो सुपर क्लास में इम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि ऑल द डक्स क्वैक and all the ducks swim. So what he did, he implemented the quack and swim method functionality in the superclass so that he should not be required to implement the quack and swim functionality in the child classes. So he made an intelligent use of inheritance so that the quack method functionality and swim method functionality can be used by the child classes. So child classes will not be required to implement or re-implement quack or swim classes for themselves. Rather, they are going to make use of the quack and swim functionality that has been written just once in the duck superclass. On the other hand, there was since all the ducks look different. For example, mallard duck has a green head and it looks different than the redhead duck. Redhead duck looks different. So he thought that whatever is common he should implement in the superclass so that he should be able to make use of the inheritance, and he should be able to reuse the common functionality, and he should write that functionality in the superclass. But since all the ducks look different, so he has to implement a display method of each duck separately. So there are, I am just showing you two concrete ducks, but there are 48 different species or different kinds of ducks. I repeat, so there are around 48 classes which he implemented. तो हर एक का डिस्प्ले मेथड डिफरेंट था, लेकिन जो कॉमन फंक्शनैलिटी थी दैट वाज रिटन जस्ट वंस. सो ही मेड एन इंटेलिजेंट यूज ऑफ he tried to get the intelligent use of inheritance. So each duck subtype, so you can see this duck is written in italic. It means that we cannot create instance of duck superclass, but we can make use of the written functionality of quack and swim, because these quack and swim are implemented in the abstract duck class, whereas display is written in italic. So display is not implemented. It is abstract method of duck abstract superclass. Since
Mallard duck, red-head duck, and all other classes are inheriting from the duck. Therefore, by principles of object orientation of Java classes, they have to implement these classes have to implement all the abstract methods which are provided by the superclass. So one abstract method was display, which after inheritance, Mallard duck class and all other duck classes were required to implement. Otherwise, if in Java, if you will not implement the abstract methods and you are inheriting a class from abstract class, then there will be a compilation error. So it means that Java forces us, and all other languages also do the same. It forces us to implement those methods to ensure that these Mallard classes, duck classes are implementing all the method of the superclass. The methods which are implemented by the duck, those methods are not required to be implemented by the concrete classes because they can use those classes. But abstract methods are must. These have to be implemented by the concrete classes. So any concrete class cannot have any abstract method. A concrete class must have either inherited concrete methods or its own overridden concrete methods. But concrete class must have all the concrete methods. Okay, the display method is abstract since all the duck subtypes look different. Okay, any question on this slide? Any understanding issue which I can explain further? If you have any question, any doubt on the discussion which I have made, please come up because now from here we are building up our discussion. So if there is any doubt, let me know. No doubts? Okay, then we move forward. If there is any doubt, please come up. Okay, then let's move to the next slide. So, what happened? Joe implemented this simple architecture of the application and floated the application in the market. Okay, and it was a popular application. But now what happened? It's time for big innovation. In the last year, the company has been under increasing pressure from its competitors. After a week-long off-site brainstorming session over a golf, the company executives think it's time for a big innovation. They need something really impressive to show at upcoming stakeholders meeting in MOI next week. तो एक हफ्ते का टाइम है and they want to show something impressive to the stakeholders to convince them that we will be able to compete amicably with our competitors. So they gave a requirement that we need our ducks to fly as well. So they brainstormed. They said, okay, up till now our ducks are not flying, so we should add the functionality of flying
in our ducts. So here is the jaw. He was given the requirement that our ducks are required to fly from next week onwards, because this demo is required to be given to the stakeholders. So Joe is happy because his structure can easily support this functionality. He thought that he just need to add a fly method in the duck class, that is a super class, abstract class, and then all the ducks will inherit it. And now he's happy that now it's my time to really show my true object oriented genius. ठीक है जी, कफ शप चढ़ा लिया उसने और खुश है, नौकरी बनने वाली है उसकी. Okay, so what he did, he just added a fly method and also implemented it, so that no further implementation would be necessary by any of the 48 subclasses, which are concrete, by the way. So Joe was happy. With little effort, he has created a wonder. But something went horribly wrong. वहां पे क्या हुआ? The rubber ducks were also flying in the demo. वहां पे आपको पता है, सीनियर्स ऐसी जगह पे उनकी नजर पड़ती है जो जहां काम खराब होता है. तो someone amongst the board members of the company, they press the button of a duck. So duck on a rubber duck. So they saw that rubber duck is also flying without any wings. So that was very bad experience. So all the stakeholders, they started laughing and started passing remarks. So that was a bitter experience for the company management. So actually what happened? Joe failed to notice that not all the subclasses of duck should fly. Actually, there were lot many classes he just overlooked, just missed, that there are certain classes which should not fly, and rubber duck was one of those classes which should not fly. Uh, so what happened that when Joe added new behavior to the duck superclass, he was also adding a behavior that was not appropriate for some duck subclasses. बिकॉज होता क्या है कि जो भी सुपर क्लास में जो भी आप फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, दैट फंक्शनैलिटी इज ओपन टू ऑल द सब क्लासेस. उनके लिए वो ओपन होती है बिकॉज ऑल दोज फंक्शनैलिटीज आर cannot, you cannot hide that functionality from the सब क्लासेस. तो ये एक लिमिटेशन भी है इनहेरिटेंस की. So now there is a flying inanimate object, that is a rubber, in the SimuDuck program. So conceptually what happened, that a localized update in duck superclass, a localized update to the code in duck superclass caused a non-local side effect
in the child classes, and we saw a flying rubber duck. I hope it is clear what happened. Any confusion or query on this problem during a demo? No, sir. No. ओके, सो अब ये देखें जो परेशान खड़ा है, वो क्या कहता है, बड़बड़ा रहा है, परेशान भी खड़ा है और बड़बड़ा रहा है, क्योंकि जो भी सुबकी हुई है स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में, इसको भी ट्रांसफर हो गई है, सोच विचार में है। सोच विचार क्या कर रहा है? ओके, सो देयर इज अ स्लाइट फ्लॉ इन माय डिजाइन. I don't see why they can't just call it a feature. It's a kind of cute feature that rubber duck is flying. So what was the problem? सोच रहा है जैसे जूनियर सोचते हैं, ये भी सोच रहा है. So what happened actually? What he thought was a great use of inheritance. It was a great use of inheritance for the purpose of reuse. So what he did in his initial design, he made a great use of inheritance, because at the back of his mind was that he should reuse his code to the maximum, so that he should have maximum efficiency in code development. But for the purpose of this reuse, this inheritance has not turned out so well when it comes to the maintenance. अब मेंटेनेंस में क्या हुआ, जब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिप्लॉयड था और कोई चेंज की रिक्वायरमेंट आ गई कि जी आप ऐसे करें, तो वहाँ पे इस इनहेरिटेंस की वजह से प्रॉब्लम आ गई है. So actually, once he realized, तो उसको याद आया कि जब रबर डक को मैंने इम्प्लीमेंट किया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसके क्वेक मेथड को भी ओवरराइड किया था. जो क्वेक मेथड है, इसका क्वेक मेथड भी एज इट इज नहीं यूज किया था मैंने उस क्वेक मेथड को ओवरराइड किया था और उस पे मैंने स्क्वीक इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि रबर डक तो क्वेक भी नहीं करती, वो स्क्वीक करती है. तो ये तो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया था, तो मुझे फिर ये भी यही करना चाहिए था कि फ्लाई मेथड को भी मैं ये करता कि ओवरराइड करता, लेकिन आई शुड नॉट हैव रिटन एनीथिंग इन द फ्लाई मेथड. तो फिर यह कि रबर डक की फ्लाई फंक्शनैलिटी में इट शुड हैव नॉट डन एनीथिंग. लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसने जब फ्लाई मेथड इम्प्लीमेंट किया था, तो उसे सारी की सारी 48 क्लासेस का कोड को रिविजिट करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया. उसने सिंपली एक फ्लाई मेथड इम्प्लीमेंट करके सुपर क्लास की तो पूरी रिकम्पाइल की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हवाले कर दी डेमो के लिए. जबकि इस डिज़ाइन में उसको एक दफ़ा सारी क्लासेस के कोड को एक दफ़ा देखना चाहिए था जाके कि कोई ऐसी क्लास तो नहीं है जहाँ पे कोई मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फ्लाई मेथड ने अवेलेबल हो जाना है सारी की सारी क्लासेस में. दिस मेथड इज गोइंग टू अफेक्ट all the classes, child classes. So then therefore he should have seen all the child classes, 48 child classes, to see what is going to be the effect of this fly method in all the child classes. तो वो उसने सारी क्लासेस को जाके रिविजिट नहीं किया, और रिविजिट करना भी मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी कोड की इम्प्लीमेंटेशन है.
तो सारी इम्प्लीमेंटेशन को जाके एक तो गो थ्रू करना, मैं फिजिकली जाके, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क एज वेल. सो ये उसने जब देखा अपना कोड खोल के रबर डक का, उसे नजर आया कि ओह यहाँ तो मैंने ऑलरेडी क्वैक को भी ओवरराइड किया हुआ था ताकि ये वाला क्वैक मैं यूज़ ना करूँ. तो फिर उससे याद आ गया कि ये रबर डक डोंट क्वैक, सो क्वैक इज ऑलरेडी ओवररिडन टू द स्क्वीक. तो फिर उसे ख्याल आया कि मुझे फ्लाई को भी ओवरराइड करके इसको, इसकी बॉडी को ब्लैंक छोड़ देना चाहिए था, so that it should not do anything else. So putting fly method in the superclass has he gave flying ability to all the ducks, including those that should not. तो इसको एबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसको एबिलिटी मिल गई क्योंकि सुपर क्लास में हमने फ्लाई मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया था. तो जो परेशान है इसका मसला अब हमने हल करना है. ठीक है जी. Okay, before going on to the case study, let's discuss some fundamental concepts. First fundamental concept is that of overriding. Because I have used the term override, so how overriding works in Java? Let's briefly discuss it. Here you can see an animal abstract class, and but this abstract class has a make sound method which is already implemented. It is not abstract, but this make sound method is overridden by the dog, but it is not overridden by cat. So once child class is overriding this make sound method and other class is not overriding this make sound method. And this overriding implementation of dog is to print woof. Okay. So now what will happen? That now let's say you could actually create animal. If you could, then calling make sound would call the method defined in the superclass animal. ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. अगर ये एब्स्ट्रैक्ट ना होती तो हम एनिमल क्लास का हम मेक साउंड मेथड अगर कॉल करते तो जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इम्प्लीमेंटेशन वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड. और इफ यू क्रिएट अ स्पेसिफिक डॉग, अगर डॉग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन कॉलिंग मेक साउंड विल डिस्प्ले द वूफ. अब यहाँ पे अगर डॉग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको हम कॉल करेंगे मेक साउंड, तो इट विल प्रिंट और डिस्प्ले वूफ. नाउ लेट्स से यू क्रिएट अ स्पेसिफिक कैट. कैट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, लेकिन कैट ने अपना वूफ, अपना मेक साउंड इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो इफ वी विल कॉल make sound method against a cat object, then what will happen? It will of the parent class. जब हम cat के अगेंस्ट make sound कॉल करेंगे तो ये parent class का make sound को कॉल करेगा, और जो भी उसकी implementation होगी that is going to be used. So cat, because cat has not does not have its own make sound, or cat has not overridden the make sound. तो अगर हम डॉग का ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर डॉग का ऑब्जेक्ट का मेक साउंड, क्योंकि इसने ओवरराइड कर लिया है, तो फिर ये डॉग का मेक साउंड कॉल होगा. लेकिन कैट ने अगर मेक साउंड को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अब अवेलेबल ही नहीं है, तो द इनहेरिटेड मेक साउंड इज गोइंग टू बी यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कैट क्लास. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग. So in this example, cat does not have make sound method. So when
you call make sound on cat, it calls the method in the superclass animal. तो ये make sound ये वाला call करेगा. So I hope the concept of overridden method is clear. If there is any query, please let me know. Okay, if there is no query, Sir? let's move forward. जी. सर ओवरराइड करके अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो मतलब ब्लैंक ही एग्जीक्यूट होगा ना मेक साउंड. ये जैसे कैट है ना, कैट ने अपना इसका अपना मैथ मेक साउंड नहीं है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कैट ने एनिमल मेक साउंड को ओवरराइड नहीं, एनिमल के मेक साउंड को ओवरराइड नहीं किया. तो अब क्योंकि ओवरराइड नहीं किया तो देन वंस वी विल call make sound against the cat, then the make sound of superclass is going to be used. But it will not happen in the case of dog. क्योंकि dog का अपना make sound है, तो ये dog ही का make sound call होगा, superclass का make sound call नहीं होगा. So we say that make sound of dog has overridden the make sound of its parent class, that is animal. जी, I hope it is clear. सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम डॉग के मेक साउंड को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, जैसे वी डोंट डिस्प्ले वो फॉर एनीथिंग, तो वो मतलब मेक साउंड खाली ही एग्जीक्यूट होगा ना, डॉग का अपना ही. नहीं, डॉग का नहीं, कैट का अगर करेंगे ना, कैट में क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो ये एनिमल का कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये कंक्रीट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, जो भी है इसमें एक्स है या वाई लिखा हुआ जो भी है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है ऊपर. तो कैट का क्योंकि नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ये अपनी सुपर क्लास का कॉल कर लेगा, एनिमल का कॉल कर लेगा कैट वाला. ठीक है. डॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कैट का डॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. कैट का ताल्लुक है अपने पेरेंट के साथ. ठीक है, इस डॉग का भी ताल्लुक अपने एनिमल के साथ है, कैट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. डॉग हैज अ रिलेशनशिप विद एनिमल एंड कैट हैज अ रिलेशनशिप विद एनिमल. कैट का नहीं है तो ये एनिमल वाला कॉल कर लेगा. डॉग का अपना है तो ये एनिमल वाला कॉल नहीं करेगा, बल्कि अपना ही कॉल करेगा. क्यों कॉल करेगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसने ओवरराइड कर दिया, तो प्रायोरिटी विल गो टू द मेक साउंड ऑफ डॉग. बस वी विल कॉल इट अगेंस्ट द डॉग. तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी मेक साउंड को, एनिमल वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी. जबकि कैट में है ही नहीं, तो कैट को ये इनहेरिटेड मेथड अवेलेबल होगा कॉल करने के लिए, और वही कॉल होगा जो इनहेरिटेड मेथड अवेलेबल है. इज इट क्लियर नाउ? जी जी सर, ठीक है. चलें, ठीक है. Okay, let's move to the next concept. This is concept of dynamic method binding. Again, the similar concept. Dynamic method binding is how Java decides what method to call when it has to decide between superclass and a subclass. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब अब जावा ने डिसाइड करना है कि जी मैंने सुपर क्लास वाला मेथड कॉल करना है, एक ही, दोनों मेथड्स का नाम एक ही है. जैसे यहाँ पीछे हम देख रहे हैं, इसका नाम भी इट हैज सेम सिग्नेचर मेक साउंड, एंड इनका सिग्नेचर सेम होगा तभी ओवरराइडिंग होगी. तो इफ इट हैज अ सेम सिग्नेचर, देन हाउ जावा डिसाइड्स विच मेक साउंड इज टू बी कॉल्ड. ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ स्लाइड नंबर 24 पे. The dynamic method binding, we call it dynamic method binding, is how Java decides what method to call when it has to decide between superclass and a subclass. So how exactly does it decide? We just made a dog but declared it as an animal. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल ये एक मेन मेथड है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें डॉग का, न्यू डॉग. ठीक है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डॉग का, और ऑब्जेक्ट को हमने एज एन एनिमल सेव कर लिया है. ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, वेरिएबल इज ऑफ टाइप एनिमल. सो वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास
and we are declaring it as an animal. उसको हम क्या एनिमल रहे हैं, जो कि सुपर क्लास है बेसिकली. तो सुपर क्लास रेफरेंस में हमने ऑब्जेक्ट रखा है चाइल्ड क्लास का. पहली बात तो ये है. Then in this example, what we really are creating a dog. Actually, dog का object है. Even though we are referencing the variable as animal, और हम जो उसके वेरिएबल है उसको उसके सुपर क्लास के तौर पे रेफर कर रहे हैं. So Java decides from the object at run time. तो Java ये देखती है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली किस क्लास का है, कौन सी वाली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा उसी का वो मेथड कॉल करेगा. तो इसलिए मेक साउंड मेथड अगर जावा का, अगर ये एनिमल का रेफरेंस हो तब भी एक्चुअल कंक्रीट ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, तो जावा देखेगी कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, तो उसके जो मेथड होगा उसको प्रायोरिटी देगी ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुपर क्लास. ठीक है जी. Java decides from the object at runtime that which method to call. So why we just don't do इस तरह की स्टेटमेंट हम क्यों नहीं लिख देते हैं? ये ऐसा अजीबोगरीब काम करने की हमें क्या जरूरत है कि ऑब्जेक्ट डॉग का है और क्या है उसको हम एनिमल रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनी कमेंट फ्रॉम द क्लास? व्हाई वी जस्ट डोंट डू लाइक दिस? हम ये भी कर सकते हैं, डॉग के रेफरेंस से नया डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, एंड यू हैव बीन डूइंग इट. टेक्निकली भी ठीक है, कोई कंपाइलेशन एरर भी नहीं होगी, सब कुछ इसका किया जा सकता है. हम इसका क्यों नहीं करते? क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? एनी आइडिया फ्रॉम द क्लास? सर जिस तरह आपने रबर डक वाला बताया था, अगर उसको में हम अगर उसकी पेरेंट क्लास को नहीं यूज करेंगे तो, और फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट क्लास के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसको पॉइंट करवा दें रबर डक की तरफ, और तो बाकी डक्स में तो अगर मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ ये जो फ्लाई वाला, तो वो पेरेंट का ही यूज कर लेगा. लेकिन अगर चाइल्ड में डक का हुआ है तो उसको प्रायोरिटी देगा, और रबर डक वाले जो फ्लाई वाला मेथड है उसको कर लेगा. बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि जो ये रबर डक वाला मसला था उस तरह का मसला हल हो जाए. वो उसी तरह हो सकता है कि जब आप जो पेरेंट क्लास है उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा और पॉइंट कर रहा होगा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को. मे बी जी, कुछ हद तक आपकी एक एस्पेक्ट आप एस्पेक्ट जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक कह रहे हैं, बट देयर इज समथिंग मोर टू इट एज वेल. सर ये भी कि उसकी जो पेरेंट क्लासेस की इम्प्लीमेंटेड क्लासेस जो हैं वो चाइल्ड क्लास के पास नहीं है अनलेस उसने ओवरराइड की हुई हो. तो वो इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम पेरेंट क्लास को ही यूज़ करके ऑब्जेक्ट फिर चाइल्ड का बना लेते हैं. चलें, पार्शली आपका आइडिया ठीक है, बट आई विल हैंडल इट इन अ डिफरेंट वे. लेट्स सी how I am going to explain it to you. The answer is that by using abstraction, you can actually group many different types of objects together. तो actually जब हम abstraction create करते हैं, जैसे हमने abstract class बना ली है animal की, तो हम जो under that abstraction there are various subclasses, तो हम उन सब क्लासेस की ग्रुपिंग कर सकते हैं. और ग्रुपिंग से अगर हम ग्रुपिंग कर लें तो ग्रुपिंग से हमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी हम पूरे फिर ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो एक ये फ़ायदा भी है हमें. लेट्स सी ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं हम. लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर स्टोरिंग द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ये मेन मेथड है, इसके अंदर हमने एक
नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉग का, और अगेन वी आर कॉलिंग इट एन एनिमल, क्योंकि सुपर क्लास डॉग इज अ काइंड ऑफ एनिमल, सो वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग in the reference of animal. Similarly, cat, we are creating an object of cat. So since cat is kind of animal, so we can technically keep that cat as a reference of, in the reference of animal. Now we can create, for example, we want to store these objects in an array. So what we can do, we can create an array list of which is of type animal. तो हम एक array list create कर रहे हैं जो कि animal type की है, तो अब इसमें हम different type के object रख सकते हैं. animal dot add dog करेंगे तो dog का object रख सकते हैं इसी array में. इसी तरह cat का object है, इसको भी रख सकते हैं, या मैं इसीलिए रख सकते हैं क्योंकि हमने एक common, उसको common टाइप के रेफरेंस के तौर पे रख लिया है. ठीक है, तो इसी तरह हम समझ लें कि हमने अगर इफ देयर आर मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, दोस ऑल चाइल्ड क्लासेस कैन बी के वी कैन कीप अंडर वन कलेक्शन, विच द कलेक्शन विच इज ऑफ अ सुपर टाइप. तो हमें अगर हम ये वाला काम करते हैं डॉग डॉग न्यू डॉग, तो फिर हमें सिर्फ डॉग की कलेक्शन सेपरेट बनानी पड़ती. ठीक है, इस हमें कैट की कलेक्शन सेपरेट बनानी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमने सुपर टाइप का रेफरेंस यूज कर रहे हैं और सुपर टाइप की एरे क्रिएट की है हमने, तो हम हर किस्म के चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को एक ही कलेक्शन में रख सकते हैं. और वी कैन, जब एक कलेक्शन में आ जाएंगे, देन वी कैन इजीली मैनिपुलेट ऑल द चाइल्ड एनिमल इन अ सिमिलर फैशन. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, जैसे पीछे एक मेथड हमारा गुजरा था, क्या उसका नाम था, ये जो है मेक साउंड मेथड है. ठीक है, तो अगर मैं इस तरह की कलेक्शन में एनिमल्स अपनी रख लेता हूं, तो देन आई कैन कॉल मेक साउंड मेथड अगेंस्ट द एनिमल. आई कैन से एनिमल डॉट मेक साउंड. तो डॉग का मेक साउंड अवेलेबल है तो डॉग का मेक साउंड कॉल हो जाएगा, कैट का अवेलेबल नहीं है तो एनिमल वाला कॉल हो जाएगा. सो वी कैन हैंडल ऑल दी sub classes in a similar fashion. So this is how we take advantage of abstraction under some superclass or under an interface. I hope the concept is clear. How we Yes. group these child classes and make their functionalities, and we tackle these classes with similar interfaces or similar way. Okay, coming back to our case study. Once he was inspecting, once Joe was inspecting, Joe परेशान खड़ा है, हाथ रखे हुए उसने कमर पे और सोचो विचार में है कि क्या करूं मैं. मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे हैं उसको. और जब वो अपनी 48 क्लासेस के कोड को जब उसने गौर फिक्र किया, तो उसे पता चला ये मैंने तो एक डिकॉय डक भी बनाई थी, उसको भी उड़ा दिया मैंने. शुक्र है कि उन्होंने वो डिकॉय डक वाला बटन नहीं दबा दिया, तो मेरी ये जो वुडन डक है ये भी उड़ती हुई नजर आ जाती है उनको. तो अब और भी परेशान है कि ये क्या हुआ, मेरे तो और भी मसले मसाइल हैं मेरे कोड में. तो here is another class in the hierarchy. Notice that like rubber duck, it does not fly, but it also does not quack. तो इसने जब अपना कोड को इंस्पेक्ट किया, अपने डिकॉय डक के कोड को, तो इसे नजर आया कि मैंने क्वैक जो मेथड था, ये इनहेरिटेड मेथड था. ये मेथड तो मैंने इसको ओवरराइड किया हुआ था टू डू नथिंग, यानी इसकी बॉडी को ब्लैंक छोड़ दिया था क्वैक मेथड की, ताकि कहीं क्वैक कराने की कोशिश करें तो वो क्वैक ना करे डिकॉय डक, क्योंकि वो नहीं करती. तो इसमें भी ऑलरेडी उसने कुछ मिक्स एंड मैच किया हुआ था ऑलरेडी इस फंक्शनैलिटी को.
उसने ओवरराइड करा दिया था ताकि इट शुड नॉट क्वैक द क्वाक डक। और फ्लाई मेथड को भी ये इसको ओवरराइड टू नथिंग करवाना चाहिए था, डुक्वायर डक को भी। ये भी ओवरलुक हो गया था उससे, डुक्वायर डक भी। अब ये सोचो, परेशान है, सोचो में है क्या करूं मैं। सोच रहा है कि काश जो है मैं I could always just override the fly method in the rubber duck the way I am with the quack method in here the quack duck। तो अब सोच रहा है कि काश मैं ये इसको कर लेता, डबल डक को इसको मैं फ्लाई मेथड को ओवरराइड कर देता और बॉडी इसकी ब्लैंक छोड़ देता, तो ये फ्लाई मेरा ना काम करता, ओवरराइड हो जाता। बट देन अब और सोच रहा है, बट देन व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड वुडन डिकॉय डक्स टू द प्रोग्राम, दे आर नॉट सपोज टू फ्लाई और क्वैक, तो फिर उसको ये काम करना होगा। तो अब मेंटेनेंस फेज में है, परेशान है, अभी समझ नहीं आ रही, ये इनहेरिटेंस मेरी कोई सही काम नहीं कर रही, मसले में फंस गया हूँ मैं। एक और रिक्वायरमेंट आ गई और ये एक और बम शेल गिरा है जो के ऊपर। रिक्वायरमेंट ये आ गई है कि एग्जीक्यूटिव वांट्स दैट प्रोडक्ट शुड बी अपडेटेड 6 मंथली। अब जो और परेशान हो गया है, पसीने आ रहे हैं उसको, जो रियलाइज दैट inheritance probably was not the answer because he just got a memo that says that the executives now want to update the product every 6 months in a way they have not yet decided on। तो हो सकता है अब डिसीजन में वो कोई 2 हफ्ते पहले डिसीजन दें या हफ्ता पहले दें कि जी अब आप ये चीज़ ऐड कर दें इसके अंदर, लेकिन 6 महीने में वो the timeline might be very short। Joe knows the spec will keep changing and he will be forced to look at all the possible override fly quack for every new duck subclass that's ever added to the program forever। अब उसको टेंशन शुरू हो गई है। मसला ये हो रहा है कि जो भी वो फंक्शनैलिटी उसको देंगे, उसको सारे का सारा कोड को एक दफ़ा रिविजिट करना पड़ेगा। जितना भी इतना बड़ा कोड लिखा हुआ उसमें, सुपर क्लास में कोई भी चेंज करेगा तो सारा पहले देखेगा, जाके एक क्लास को देखेगा, एनालाइज करेगा, टेस्ट करेगा, देखेगा भाई, यानी कि ए स्मॉल चेंज रिक्वायर्स रिविजिट ऑफ ऑल द कोड। ये उसको समझ आ गई है कि ये मसला जो है ना मेरे डिज़ाइन में मसला बना है। ये इस तरह जाके बार बार सारे का सारा कोड विजिट करना, ये काम ठीक नहीं है। सो ही नीड्स अ क्लीनर वे टू हैव ओनली सम बट नॉट ऑल ऑफ द डक टाइप्स फ्लाई एंड क्वैक। तो अब परेशान है। अब एक आइडिया आ गया उसको। आइडिया आया कि ये मैं भूल जाता हूँ, तो कोई डिज़ाइन बाई कॉन्ट्रैक्ट भी उसने पढ़ा था बैचलर में। उसने कहा चलें ये मैं इंटरफेसेस बनाता हूँ। इंटरफेसेस में क्या होता है, इंटरफेसेस में फॉर एग्जांपल ही हैज़ मेड फ्लाईएबल इंटरफेस। अब वो सोच रहे हैं कि इस तरह कर लेता हूँ कि जो मेरी चाइल्ड क्लासेस फ्लाई करेंगी दे शुड इम्प्लीमेंट फ्लाईएबल इंटरफेस, ताकि मुझे पता हो कि सिर्फ फ्लाई मेथड यहाँ से निकाल दिया। डक सुपर क्लासेस ने क्या किया, डक की सुपर क्लास से फ्लाई का मेथड निकाला एंड ही हैज़ टेकन इट अ सेपरेट, इसको एक फ्लाईएबल इंटरफेस में ले गया और फ्लाई मेथड यहाँ ले गया, और फ्लाई मेथड जो है वो अब रेड हैट फ्लाई करती है। सो रेड हैट विल बिसाइड्स इनहेरिटिंग फ्रॉम डक abstract class, it has to implement a flyable interface
and it also has to implement MailDuck also fly, so it has to also implement the fly method of flyable interface. इसी तरह जो एक क्वैक मेथड है, ये बाहर निकालने का सोचा उसने कि बाहर निकाल लेता हूँ मैं और एक क्वैकेबल इंटरफेस बनाता हूँ, और इसमें ये होगा कि क्वैक मेथड जो है वो MailDuck विल आल्सो इम्प्लीमेंट क्वैकेबल इंटरफेस बिकॉज इट क्वैक्स एज वेल. Red Hat Duck quacks, so it will also implement quack method through quackable interface. जबकि रबर डक जो है वो क्वैक नहीं करती, क्वैक करती है लेकिन स्क्वीक करती है. तो रबर डक भी इम्प्लीमेंट करेगी क्वैक लेकिन अपना करेगी, और डिक्वायर डक क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करती, ना फ्लाइबल को करती है ना ये करती है, तो इट विल नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस ऑफ फ्लाइबल एंड क्वैकेबल. तो इससे वो जो उसको मसला ये आ रहा है कि वो सारा कोड रिविजिट नहीं करना चाह रहा, कोई चेंजेस की जरूरत में. सो ही वांट्स दैट दे शुड बी सम वे कि मुझे सारा कोड ना रिविजिट करना पड़े. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फ्लाई में चेंजेस करनी है या तो मैं सिर्फ जो क्लासेस फ्लाइबल इंटरफेस को इनहेरिट कर रही हैं सिर्फ मैं उसको जाकर देख लूँगा. इसका क्वैकेबल में सिर्फ जो क्लासेस क्वैकेबल को इम्प्लीमेंट कर रही हैं सिर्फ उनको देख लूँगा, सारा कोड मुझे नहीं देखना पड़ेगा. तो ये सोच आ रही है उसको. अब जावा में ये होता है कि जावा इंटरफेस ओनली हैज़ मेथड सिग्नेचर्स. इंटरफेस में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, क्वैक में नहीं हो सकती. सेम इज़ द केस विद सी शार्प में भी जो कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का वो ऐसे ही है. इंटरफेस में ओनली यू कैन हैव अ मेथड सिग्नेचर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास फ्लाइबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी दे हैव टू इम्प्लीमेंट देयर फ्लाई मेथड. अपना फ्लाई मेथड इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. इसी तरह अपना क्वैक मेथड इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो इट मीन्स कि आप वो या दहानी, क्योंकि आपको सारा कोड नहीं देखना पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन कोड रीयूज, क्योंकि ये कोड इनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इसको रेड हैट डक वाला यहाँ पे इसको क्वैक का कोड लिखना पड़ेगा, फ्लाई का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे. और लेकिन यह है कि उसको पता होगा कि बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस ही विल नो कि मेरा कौन सा सबसेट है जो फ्लाई को इम्प्लीमेंट कर रहा है और मेरा कौन सा सबसेट है जो कि क्वैक को इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो कुछ ही इज एक्सपेक्टिंग कि कुछ थोड़ी सी मुझे रिलैक्सेशन हो जाएगी, मुझे सारा कोड नहीं देखना पड़ेगा. और जो क्लास कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो सिर्फ उसी क्लास वो क्लासेस सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस रिक्वायर क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग इट इज गोइंग टू. अब यहाँ पे यह है कि सारी क्लासेस सारी डक स्विम करती हैं तो दे आर रीयूजिंग द स्विंग मेथड. तो कुछ हद तक कोड रीयूज हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कोड रीयूज नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था. अब कोड रीयूज पे कंप्रोमाइज कर रहा है, लेकिन कम से कम ये चीज़ हो रही है कि उसको अगर कोई चेंज करनी पड़ती है तो सारा कोड रिविजिट नहीं करना पड़ेगा. सो लेट्स सी द फॉर्मल व्हाट आई. अब ये आइडिया देखें, इसको फॉर्मली क्या कह रहा है वो. आई कुड टेक अ फ्लाई आउट ऑफ द डक, यहाँ से फ्लाई निकाला सुपर क्लास, and make flyable interface with fly method. That way only the ducks that are supposed to fly will implement that interface and have a fly method, and I might as well make a quackable too since not all ducks can quack. अच्छा जी, any queries or comments from the class on this design? क्या चीज़ें आपको पॉजिटिव लग रही हैं और क्या इसमें आपको लिमिटेशन नज़र आ रही हैं? क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? लेट्स हैव अ बिट डिस्कशन ऑन इट. सर नुकसान तो सबसे बड़ा यही है कि रीयूज नहीं हो रहा फ्लाई और क्वैक का कोड. जहाँ जहाँ
चाहिए वो इंटरफेस, उसको इम्प्लीमेंट भी बार बार करना पड़ेगा। सही, ठीक है। सर और फ्लाई के मेथड में कोई फायदा चेंज आता है फ्यूचर में, तो वो इसको फिर सारी 48 क्लासेस में जाके उसको फ्लाई के मेथड को बार बार चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये फायदा है नुकसान है? ये नुकसान है सर। ये उसने तो सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर दिया ना फ्लाई मेथड, तो हर का वो तो फ्लाई मेथड यूज ही नहीं करेगा ना। एक तो नुकसान यही है कि ये सारे फ्लाई इसको री इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ना, जहाँ जहाँ जिन जिन क्लासेस ने अप्लाई करना है। अब चाहे वो जी कॉपी पेस्ट हमारे कोड को या जो भी करे, बट ही हैज टू राइट अ सेपरेट। तो कोड सर रीयूज पे तो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन ये तो नुकसान ही बता रहे हैं ना, फायदा क्या हो रहा है उसको? The good thing is कि अगर suppose number of classes जिन जो fly या quack use करें they are few, तो तब ये ज़्यादा usable है, क्योंकि जो जिन classes को नहीं use करना fly and quack उनकी ज़रूरत ही नहीं है उन interface को implement करने की। So number of classes पे भी depend करता है, कम है तो बेसिकली सही बात है। जो फायदा उसको हो रहा है वो यही हो रहा है कि सारी की सारी कोई भी नई सिचुएशन आएगी तो सारी क्लासेस का कोड कम से कम उसको नहीं देखना पड़ेगा दोबारा। उसको पता होगा, उसको ही विल ओनली हैंडल द सबसेट। जिस पर्टिकुलर अगर फ्लाई रिलेटेड इश्यूज है तो फ्लाई वाली क्लासेस को देखेगा, क्वैक रिलेटेड कोई चेंजेस करनी है तो क्वैक वाली क्लासेस को देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी क्लासेस ने क्वैक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कौन सी क्लासेस ने फ्लाई किया हुआ है इम्प्लीमेंट। तो वो उससे ये एक फायदा हो रहा है कि वो सारी के सारा कोड को नहीं देख रहा, एक लिमिटेड सेट ऑफ कोड को उसको रिविजिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी चेंज। ये एक फायदा नजर आ रहा है। बाकी एक फायदा ये भी नजर आ रहा है उसको कि अभी भी जो कॉमन फंक्शनैलिटी है लाइक स्विम, स्विम क्योंकि सारी डक स्विम कर रही हैं, वुडन भी कर रही है, रबर भी कर रही है, तो स्विम के कोड फिर भी अभी भी कुछ हद तक कोड रीयूज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ फायदा है। लिमिटेड हो गया लेकिन काफी, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा भी हो रहा है उसको, बट इट हैज लिमिट वेरी लिमिटेड एडवांटेज नाउ। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस सम प्रोज एंड कॉन्स। अब ही हैज गॉट द एडवाइस फ्रॉम हिज कुलीग, उससे पूछ रहा है भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिजाइन, और उसने उसकी खूब उसको झाड़ा है। वो कहा जी तुम तो बिल्कुल ही पगले दीवाने हो गए हो। शी इज सेइंग दैट दिस इज लाइक द डम्बेस्ट आइडिया you have come up with. You can say duplicate code, क्योंकि बहुत सा कोड डुप्लीकेट करना पड़ा है उसको। If you thought having to override a few methods was bad, override to nothing यही कर रहा था ना पहले, तो कह रही वो आपको आइडिया बुरा लग रहा था कि थोड़ी सी क्लासेस थी उनको ओवरराइड कर रहे थे, वो आपको बुरा लग रहा था। हाउ आर यू गोना फील व्हेन यू नीड टू मेक लिटिल चेंज टू ऑल द फ्लाइंग बिहेवियर्स इन ऑल 48 फ्लाइंग डक सब क्लासेस? उसने ये आर्गुमेंट दिया कि जी ये आप फिर क्या करोगे, तो आपको बिल्कुल ही आपको छोटी छोटी चेंज के लिए सारा क्लासेस में चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको। सो इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द कोड रीयूज। पहली बात तो ये हो गई, वो कह रही जी कोड रीयूज तो ना होने के बराबर ही हो गया अब आपका, स्पेशली फॉर फ्लाई एंड क्वैक बिहेवियर्स। सो इट जस्ट क्रिएट्स अ डिफरेंट मेंटेनेंस नाइटमेयर। तो उसने कहा जी उसको तो आइडिया बिल्कुल नहीं पसंद है। उसने कहा जी ये तो कोई आपका आइडिया नहीं पसंद आया मुझे, सो बेटर लुक फॉर सम डिजाइन पैटर्न। ठीक है जी, तो यहाँ हम पहुंचे। अब हम एक डिज़ाइन प्रिंसिपल ज़हन में आया हमारे, जो कि एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है। थोड़ा सा बुक्स खोली उसने, फाउंड अ डिज़ाइन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है जो हमने ग्रेस में भी देखा है, दैट इज प्रोटेक्टेड वेरिएशंस। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन दैट वेरी। वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो चेंज हो रही हैं, वेरी हो रही हैं, एंड सेपरेट देम फ्रॉम व्हाट स्टेज द सेम। तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जी जो चीज़ों में चेंज होने का इम्कान नहीं है उनको अलग करें, और जिन चीज़ों को में चेंज होने का इम्कान है उनको अलग करें, इनको सेपरेट करें।
ये प्रिंसिपल बता रहा है। And this is our first of many design principles. We'll spend more time on these throughout the book. और हमने भी इसको एज अ ग्रेस्प प्रिंसिपल्स में एक प्रोटेक्टिव वेरिएशन के नाम से पढ़ा है कि जी वेरिएशंस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको सेपरेट रखना चाहिए. So let's see how what we can do about this principle in this particular case study. Actually, what we are trying to do, we want to take what varies and encapsulate it so that it won't affect rest of your code. तो अलग करना है जो चीज़ें चेंज हो रही हैं और उनको हमने इनकैप्सुलेट करना है ताकि उसका इफेक्ट जो है बाकियों पे ना आए. The result, there would be fewer unintended consequences from code changes and more flexibility in your system. Here's another way to look about this principle. Take parts that vary and encapsulate them so that later you can alter or extend the parts that vary without affecting those that don't. तो हम ये कह रहे हैं कि जी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको अलग जाके एनकैप्सुलेट करें, किसी डब्बे में बंद करें उनको, और ताकि उनको किसी कैप्सूल में बंद करें, डब्बे में बंद करें, ताकि लेटर ऑन अगर उनमें कोई चेंजेस भी आती हैं तो वो चेंजेस प्रोपगेट ना हो आउटसाइड द कैप्सूल, वो बाहर प्रोपगेट ना हो. ठीक है, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं. Okay, let's see what we can do now. What can we do in this particular case study? So there was a duck class and there were many duck concrete classes. The duck class is still superclass of all the ducks, but we are pulling out the fly and quack behaviors and putting them into another class structure. तो हम ये कर रहे हैं कि हमने, क्योंकि डक इज एन एंटिटी और हमने डक एंटिटीज़ के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, डक एंटिटीज़ का क्लासेस बनाई हैं. जब हम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो यही करते हैं हम, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं उन एंटिटीज़ की बेस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. So this is what we have already done, but now what we are trying to do, हम ये चाह रहे हैं कि फ्लाई और क्वैक का जो बिहेवियर है इसे हम बाहर निकालें. It should not be part of the duck class because fly and quack behaviors are changing over a period of time and from duck to duck. दोनों तरह की चेंजेस इसमें हमें नजर आ रही हैं. So we are pulling out the behavior. So we are making classes, a set of classes which will have a flying behavior, and we will also have set of classes which will have a quacking behavior. So behaviors are those behaviors which are expected to change have been pulled out from the duck class structure. Now flying and quacking each get their own set of classes. Various behaviors implementations are going to live here. So it is a kind of enclosure where we want to bring out these two behaviors. One is flying behavior, another one is quacking behavior. Now conceptually it is, I hope it is clear, but actually how we are going to do, इसको आगे देखते हैं. Designing duck behaviors. So how are we going to design set of classes
that implement fly and quack behaviors. अब करना कैसे है? ठीक है जी. We want to assign behavior to instance of the duck. Better if we can change the behavior dynamically. तो हम करेंगे क्या, ये behaviors को बाहर निकाल लेंगे और हम behavior duck instance को जब behavior, जिस duck instance को जो behavior चाहिए होगा वो उसको हम assign कर देंगे जब ज़रूरत होगा उसको. ये सेपरेटली एक जगह पड़े होंगे behaviors as a separate set of classes, और जिस duck को जब assign करना होगा behavior हम उस वक्त assign कर देंगे. ये हम चाह रहे हैं. और ये भी हो सकता है कि हम डायनेमिकली उनका बिहेवियर चेंज भी कर सकें. फॉर एग्जांपल एक डक बीमार है, हम कहते हैं ये बीमार डक है, इट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है. उसके बाद वो ठीक हो गई है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, तो अब उसने उड़ना शुरू कर दिया है, तो हम उसको साइन कर देंगे ड्यूरिंग इट्स लाइफ जब भी कि जी हाँ ठीक है जी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू कैन फ्लाई. दिस इज व्हाट वी कैन चेंज अ बिहेवियर डायनेमिकली. इसका भी करना चाहते हैं हम, कैसे हो जाए तो और ही काम आसान हो जाएगा हमारा. So here comes our second design principle that we are going to make use of, and it is program to an interface, not an implementation. ठीक है जी, क्या चीज़ है ये, इसको हम देखते हैं आगे. So we will use interface to represent the behavior. So what are we going to do? We are creating an interface. नाम हमने उसका रख दिया फ्लाई बिहेवियर, और इस इंटरफेस का एक मेथड है, मेथड सिग्नेचर है इसका फ्लाई, और हम दो कंक्रीट फ्लाई बिहेवियर इंप्लीमेंट करेंगे. वन इज फ्लाई विद विंग, बिकॉज दिस concrete class has to implement this interface, therefore it has to implement the fly behavior. So fly with wing behavior will be implemented by fly with wing class, and then there is another fly class which is fly no way. That is that a class which doesn't fly, it will implement fly no way. This fly method will be blank, it will do nothing. So this is how we are planning to implement a fly behavior class structure. So there will be an interface with a signature, and then there will be classes which will have actually implemented fly behavior. So up till now we have identified only two fly behaviors. One is fly with wing, and another one is no fly, because rubber duck can't fly, so it will implement this one. Decoy duck, wooden duck also can't fly, so it will make use of this behavior. All other ducks will implement this behavior. So only two kinds of behaviors, and we are assign these behaviors to the ducks on our choice. So from now on, duck behaviors will live in a separate class structure, a class that implements a particular behavior interface. That way the duck classes won't need to know. अब duck classes का फायदा क्या होगा, duck को implementation टाइम पे कोई पता करने की जरूरत नहीं है कि क्या बिहेवियर है. ये बिहेवियर हम रन टाइम पे असाइन कर देंगे उसको, या जब डक का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जब डक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस वक्त हम उसको बता देंगे कौन कौन सा बिहेवियर आपका है. बाकी कोड डेवलपमेंट टाइम पे हमें उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है डक को कि कौन सा बिहेवियर आपका है. That way duck classes won't need to know any of the implementation details for their own behavior. अच्छा जी, any question on this slide?
क्लियर है? चलेंगे आगे चलते हैं. Okay, now let's see again the same thing, same structure. थोड़ा सा concept discuss कर लें. Once we say program to implementation and program to interface, what we mean by that? If we create some doc object and we keep it in as a reference of concrete class, this is a concept of program to implementation. We are creating object of a dog and we are keeping the interface as a concrete class. तो ये जो simple style है, this is called programming to implementation. और हमारा principle हमें क्या बता रहा है? Program to an interface, not an implementation. तो according to the principle, this is not a recommended approach. कि आप concrete doc का interface अगर करेंगे तो implementation को अगर reference देंगे objects को तो वो it is not a recommended approach. So you should avoid programming to an implementation. इस तरह का code avoid करना चाहिए. Although it is legal, but it should be avoided. And then you call any method, for example, d.bark. Declaring a variable d as a type dog, which is a concrete implementation of animal, forces us to code to a concrete implementation. But programming to an interface or a supertype would be a statement like this: new dog, animal, you are creating object against a supertype or abstract class or interface, कोई भी हो सकता है. And then we call the method against the superclass. So we know it's dog because of the object, but we can now use animal reference polymorphically. Even better, rather than hard coding the instantiation of subtype, for example, new dog भी अगर हम ना लिखना पड़े हमें तो और बेहतर है, क्योंकि न्यू डॉग का मतलब है कि द क्लास जिस क्लास में स्टेटमेंट लिखेंगे उसको इस कंक्रीट क्लास का नॉलेज होना चाहिए. ओनली देन इट कैन राइट एज लाइक दिस न्यू डॉग. तो इवन बेटर that we assign a concrete implementation object at runtime. For example, अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट हो, get animal करें हम, तो जो भी हमें डॉग है या कैट है जो भी है उसका हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए. यानी कि इस तरफ भी हमें एक्चुअल न्यू वाली स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, न्यू करके हमने स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े. यहाँ भी हमें गेट एनिमल वगैरह ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर आ जाए तो और बेहतर हमारी फ्लेक्सिबल हो सकता है कोड. वी डोंट नो व्हाट द एक्चुअल एनिमल सब टाइप इज हेयर. सो हमें कोड लिखते हुए ये भी नहीं, इस कोड में भी वो नॉलेज नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा गेट एनिमल को कॉल करने से. ऑल वी केयर अबाउट इज दैट इट नोज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू मेक साउंड. अब जो भी ऑब्जेक्ट आ जाता है मेक साउंड कॉल करेंगे तो रेलिवेंट मेक साउंड कॉल हो जाना चाहिए. So this is the concept of programming to implementation and programming to interface or a supertype. Any question on this slide? So recommended is to program to interface, and program to implementation is not a recommended approach. ठीक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें डॉग है, डॉग का मेक साउंड है तो इट मे कॉल अ बार्क मेथड जो कि डेलीगेट कर रहा है बार्क को मेक साउंड. ये वाला मेक साउंड डेलीगेट कर रहा है म्यू को. बट
At the abstract level, we are only calling animal.makeSound. But this make sound for dog object will call bark, for cat object will call mew. But it will be only possible if we program to an interface or a super type. If we did like this, then it will force us to call the bark directly. ये जो flexibility हमें मिल रही है because of this polymorphism, ये flexibility हमसे छीन जाएगी अगर हमने इंटरफेस या सुपर टाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग ना की तो. So coming back to the case study. So this is what we have done for the quack behavior. Again, we have created an interface of quack behavior with quack abstract method, and then there are three concrete quack behaviors. One is quack, then is squeak, then mute quack. तो जितनी डक्स क्वैक करती हैं वो इस बिहेवियर को यूज़ करेंगी. जो रबर डक है वो स्क्विक बिहेवियर को यूज़ कर लेगी. जो क्वाय डक है वो म्यूट क्वैक को इम्प्लीमेंट कर लेगी. बट वी हैव आइडेंटिफाइड ओनली 3 quack behaviors. One is quack, squeak and mute, and these are encapsulated under an interface with the name of quack behavior. ठीक है. तो ये अब ये समझ लें कि जब हम किसी भी सुपर क्लास के नीचे चाइल्ड क्लासेस को ले आते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उन क्लासेस को हाइड कर रहे होते हैं अंडर एन इंटरफेस और अंडर अ सुपर टाइप. उनको हाइड कर देते हैं उनके नीचे. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कह लें इसको, हाइडिंग कह लें. दिस ऑल इज हैपनिंग because of creating interfaces or because of creating abstract classes, and these two concrete classes are hidden behind fly behavior interface. These 3 concrete classes are hidden behind quack behavior interface. So each behavior is in a separate subclass. Each behavior is in a separate subclass. Okay, now we have created separate behavior structures. Now how we are going to make use of these for duck classes? So what we have done, we have designed for a behavior reuse. We have created a design for behavior reuse. With this design, other types of objects can reuse our fly and quack behaviors because these behaviors are no longer hidden away in duck classes. अब ये एक्चुअल बिहेवियर थे, इन बिहेवियर्स को हमने बाहर निकाल लिया है. अदरवाइज ये जो बिहेवियर थे ये डक क्लासेस के अंदर छुपे हुए थे, उनके अंदर एम्बेड हुए थे. हमने वहाँ से निकाल लिया है, एंटिटी क्लासेस से निकाल के हमने बिहेवियर क्लासेस बना दिए हैं. क्योंकि जनरली अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस से डिज़ाइन करते हैं तो हम क्लासेस बनाते हैं बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटीज. लेकिन यहाँ अब जो हम क्लासेस बना रहे हैं, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटीज, रादर दीज क्लासेस आर बेस्ड ऑन बिहेवियर्स. तो ये बुनियादी डिफरेंस है इन क्लासेस के बनाने के पीछे. एंड वी कैन ऐड न्यू बिहेवियर्स विदाउट मॉडिफाइंग एनी ऑफ आवर एग्जिस्टिंग बिहेवियर क्लासेस or touching any of the duck classes that use flying behavior. So we get the benefit of reuse without all the baggage that comes along with inheritance. तो ये back to this classes, for example एक नया कोई fly behavior आ जाता है, for example fly with drone, fly with something different, fly with rocket. तो कोई भी नया बिहेवियर आता है तो we'll just have to add a class, concrete class and under a fly behavior. कोई भी नया quack behavior आ जाता है तो हम will just add a concrete class under a quack behavior. तो हमें ना duck classes में कोई छेड़छाड़ करनी पड़ेगी,
ना इन एग्जिस्टिंग क्लासेस के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी. वी जस्ट हैव टू ऐड अ न्यू क्लास. इन क्लासेस को रिविजिट नहीं करना पड़ेगा हमें. सबसे बड़ा फायदा ये है. ना डक क्लास किसी को रिविजिट करने की जरूरत है हमें, ना हमने इन एग्जिस्टिंग क्लासेस को रिविजिट करने की जरूरत है. वी जस्ट हैव टू plug in new functionality and that's all. And so we are getting reuse. अब Quake है, Quake बहुत सी क्लासेस यूज कर रही होंगी, तो एक तरह का we are achieving a reuse. Quake बहुत सी क्लासेस यूज कर रही हैं, तो हमने एक बार ही Quake को इम्प्लीमेंट किया. So there might be 12 or 13 classes, वो सब यूज करेंगे इसी एक कोड को. तो we are achieving a code reuse in a different way. Okay, any question on these two slides? This one and this one. ओके, अब हम जी सर क्या हम इस क्वैक को हम प्लेस करेंगे उस रेड हेड डक की सब क्लास में, या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए सिर्फ डायरेक्टली कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि अब हमने इसको अब यूज़ कैसे करना है ना. डक क्लासेस कैसे इसको यूज़ करेंगे, अब मैं आगे ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ. बहरहाल अभी तक हमने ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि वी हैव क्रिएटेड अ क्लास स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन बिहेवियर्स. It is different than typical object oriented design where we create classes based on real world entities. ठीक हो गया. अब हमने बिहेवियर की सेपरेट कर ली क्लासेस, तो हम कोड को रीयूज करेंगे. जितनी भी क्लासेस जितनी भी डक्स क्वेक करेंगी, हमने इसी एक क्वेक क्लास को यूज करना है. जितनी क्लासेस फ्लाई विंग करेंगी, हमने एक ही जगह कोड लिखा है. अब इस कोड को हम रीयूज करेंगे बाई कंपोजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स अंडर दोज क्लासेस. वो अब आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे करेंगे हम. अभी मैंने डिस्कस नहीं किया कि अब यूज कैसे करना है. अब हम आगे मैं यूज बताऊंगा आपको कैसे यूज करेंगे. अब इसको कैसे कोड रीयूज हो रहा है. ओके, सो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग डक बिहेवियर. तो ये हमारी डक क्लास थी. डक क्लास में हमने क्या किया, हमने दो रेफरेंसेस डाल दिए हैं इंटरफेसेस के. एक फ्लाइंग बिहेवियर स्ट्रक्चर का जो टॉप लेवल क्लास है उसका बिहेवियर इंटरफेस है, फ्लाई बिहेवियर इंटरफेस का रेफरेंस डाला यहाँ पे. और दूसरा हमने क्वैक बिहेवियर क्लास स्ट्रक्चर का इंटरफेस डाल दिया है, जो टॉप लेवल इंटरफेस है उसका स्ट्रक्चर डाल दिया यहाँ पे, रेफरेंस डाल दिया. सो नाउ डक हैज नॉलेज ऑफ the interfaces which are actually interfaces, not implementation. So duck, what we are doing, we are programming to an interface, not implementation. So, because duck has interface knowledge of the interface only, in which there is no implementation, because implementation is hidden under the interface. तो डक को कंक्रीट क्लास का नॉलेज नहीं है डिज़ाइन टाइम पे, उसको सिर्फ इंटरफेस का नॉलेज है. द बिहेवियर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज बिहेवियर इंटरफेस टाइप. ठीक है, इंटरफेस का नाम था फ्लाई भी, एक इंटरफेस का नाम है फ्लाई बिहेवियर, दूसरे इंटरफेस का नाम है हमारा क्वैक बिहेवियर. द इंस्टेंस वेरिएबल होल्ड द रेफरेंस टू स्पेसिफिक बिहेवियर एट रन टाइम. तो एक्चुअल कौन सा इंस्टेंस हमने यूज करना है, कौन सा कंक्रीट इंस्टेंस हमने यूज करना है, वो हम रन टाइम पे आएगा. डिजाइन टाइम पे, कंपाइल टाइम में कोई यहाँ पे नॉलेज नहीं है डक के पास. डक के पास नॉलेज जो कंपाइल टाइम पे सिर्फ इंटरफेस का है. साथ ही साथ हमने दो मेथड ऐड कर दिए हैं इसके अंदर. एक है परफॉर्म क्वैक, which is going to make use of quack behavior reference, and a perform fly, which is going to make use of fly behavior reference. तो ये दो चेंजेस कर रहे हैं हम इसके अंदर. These methods replace fly and quack.
पहले यहाँ पे क्वैक था और फ्लाई था, उन दोनों को निकाल दिया, उनकी जगह हमने ये वाले मेथड ले आए, परफॉर्म क्वैक एंड परफॉर्म फ्लाई, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है. दे देयर इम्प्लीमेंटेशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन. The key is that duck will now delegate its flying and quacking behavior, और delegate करेगा जिस जिस behavior class का जो behavior इस्तेमाल करेगा, तो duck खुद implement नहीं कर रही, उसको delegate करेगी जो behavior चाहिए. It will now delegate a flying and quacking behavior instead of using quacking and flying methods defined in duck class और सब क्लासेस. तो वो ये पहला बात तो ये स्ट्रक्चर हो गया. अब देखें इसमें हम कर क्या रहे हैं, जो परफॉर्म क्वैक है, परफॉर्म क्वैक की, अब ये जो परफॉर्म क्वैक मेथड है, ये जो हम नया डाल रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं. ये हमारे पास रेफरेंस आ गया इंटरफेस का, क्वैक बिहेवियर इंटरफेस का रेफरेंस आ गया. हमने परफॉर्म क्वैक में वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस क्वैक बिहेवियर रेफरेंस, और हम इसको कह रहे हैं जी क्वैक बिहेवियर डॉट क्वैक. अब क्वैक जो मेथड है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द बिहेवियर क्लासेस. क्वैक की जो बिहेवियर क्लासेस है, उनके अंदर इसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है क्वैक की. तो एक्चुअली क्या किया है, परफॉर्म क्वैक ने खुद कुछ भी नहीं किया, उसने जो क्वैकिंग का बिहेवियर है वो उसने डेलीगेट कर दिया है क्वैक बिहेवियर इंटरफेस को, कि जी आप क्वैक करें मेरी जगह पे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन. खुद कुछ नहीं किया, आगे पास ऑन कर दिया काम को कि जी आप करें. ये किसको कह रहे हैं, क्वैक बिहेवियर को कह रहे हैं कि जी आप ये करें. So each duck has a reference to something that implements the quack behavior interface rather than handling the quack behavior itself. जो perform quack है, ये खुद नहीं quack कर रहा. Rather than handling the quack behavior itself, the duck object delegates that behavior to the object referenced by the quack behavior. तो ये भी हमने कंपाइल टाइम पे ये वाला कोड लिखा हुआ है. दिस इज अ कंपाइल टाइम कोड कि हमने इंटरफेस, तो अगेन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग टू एन इंटरफेस. हम उस इंटरफेस के रेफरेंस को कह रहे हैं कि आप क्वैक करें, किसी कंक्रीट क्लास को नहीं कह रहे हैं, हम इंटरफेस को कह रहे हैं. तो अगेन इट दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग टू एन इंटरफेस. दिस इज रेफरेंस ऑफ इंटरफेस, दिस इज calling an object of an interface. G, any query on these two statements? Okay, let's see further code. अब जो डक के नीचे कंक्रीट क्लासेस हैं, डक के नीचे कंक्रीट क्लासेस हैं. फॉर एग्जांपल मैलर्ड डक इज अ कंक्रीट क्लास अंडर डक हायरार्की. अब मैलर्ड डक के जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मैलर्ड डक का, तो उसके कंस्ट्रक्टर में हम ये डिसीजन डाल रहे हैं कि जी इसने क्वैक करना है या फ्लाई करना है, या क्या करना है क्या नहीं करना, ताकि जब भी मैलर्ड डक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, साथ ही उसको पता चल जाए उस ऑब्जेक्ट को कि मैंने फ्लाई करना है कि नहीं करना. ठीक है, जैसे डक का बच्चा पैदा होता है, तो डक को पता होता है कि मैंने क्या करना है. ठीक है, जो भी इंसान का बच्चा पैदा होता है उसको पता है मैंने दूध पीना है. मैंने डक का बच्चा पैदा है, उसको पता है जी मैंने क्या दाना, उसके पैदाइश पे ही उसको पता होता है कुछ के जी मैंने क्या करना है. यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं कंस्ट्रक्टर में. जैसे ही मैलर्ड डक का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इट विल नो आई हैव टू क्वैक एंड आई हैव टू फ्लाई. मेरी किस्मत में यही लिखा गया है कि मैंने ये करना है. तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इट गेट्स, तो हमने क्या किया, हमने मैलर्ड डक का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में ये डिसीजन डाल दिया है कि अ न्यू क्वैक ऑब्जेक्ट ऑफ, ये बिहेवियर क्लासेस है ना दोनों, तो बिहेवियर इसको असाइन हो गया
क्वैक बिहेवियर असाइन हो गया इसको, साथ ही फ्लाई बिहेवियर असाइन हो गया। तो जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा नथिंग विल बी असाइंड, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्वैक बिहेवियर एंड फ्लाई बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स विल बी असाइंड टू द मैलर्ड duck, and this duck is a concrete class of duck abstract class. A mallard duck uses quack classes to handle its quack. So when perform quack is called, the responsibility for quack is delegated to the quack object and will get the real quack. अब quack behavior पीछे हमने क्या किया था, quack behavior को हमने quack असाइन किया है। अब quack behavior में जो भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कंक्रीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसका quack कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे quack में जो भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट आएगा, जब हम वहां पे करेंगे quack behavior डॉट quack, तो जिस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालेंगे हम उसका quack कॉल हो जाएगा। लेकिन हमें कोड हमारा कोड बस एक दफे लिखा है हमने, कोड में चेंजेस कोई नहीं आ रही हमारी। And it uses for this fly with wing, uses fly with wing as its fly behavior type, जबकि मैलर डक का डिस्प्ले मेथड सेपरेट है जो कि मैलर डक में ही इंप्लीमेंट किया गया। Remember, मैलर डक inherits the quack behavior and fly behavior instance variables from duck class। अब ये quack behavior और fly behavior ये इसने यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की है। मैलर डक का में जो quack behavior है, these are not defined in this class, rather these are inherited behaviors which are inherited from the duck class। हमने duck class में एक बार ये डिक्लेयर किए हैं quack behavior और fly behavior। duck की भी इम्प्लीमेंटेशन में ख्याल पीछे गई थी हमारी, ये है duck class। तो duck class में हमने ये डिफाइन किया है, लेकिन अब रीडिफाइन नहीं करेंगे हम किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास में ओनली वी आर मेकिंग यूज ऑफ दीज क्वैक बिहेवियर, दीज वेरिएबल्स, बिकॉज दीज आर इनहेरिटेड, और उनको हमने ये साइन कर दिया। आई होप दिस कोड इज क्लियर। जी कोई हाँ ना कर दें? यस सर। यस सर। अच्छा ओके, ये इसकी कोलीग ने इसको फिर पकड़ लिया है। मैंने कहा जी तुम ज़्यादा तेज ना बनो। वेट अ सेकेंड, डिडंट यू से वी शुड नॉट प्रोग्राम टू एन इंटर इम्प्लीमेंटेशन, बट व्हाट आर वी डूइंग इन द कंस्ट्रक्टर? ये कंस्ट्रक्टर पे जाते हैं, तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर पे क्या कर रहे हैं हम, न्यू क्वैक न्यू फ्लाई। मुझे आप पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि जी आपने कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आनी चाहिए कोड में। बट व्हाट आर वी डूइंग इन द कंस्ट्रक्टर? वी आर मेकिंग न्यू इंस्टेंस ऑफ कंक्रीट क्वैक इम्प्लीमेंटेशन क्लास। सो इट्स अ गुड कैच, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग फॉर नाउ। इसमें यहाँ पे फिर भी एक्सेप्टेबल है। वजह यह है कि हमें पता है कि मैलर डक ने हमेशा क्वैक ही करना है, मैलर डक ने हमेशा फ्लाई विद विंग ही करना है, मैलर डक ने यही करना है। तो इसलिए यहाँ पे कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे हमें जायज़ हो जाती है जब हमें पता है कि इसने फ्यूचर में इस बिहेवियर ने चेंज नहीं होना, तो वी कैन स्ट्रेट अवे कॉल मेक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट अवे। लेकिन अगर मैलर डक ने स्ट्रेट अवे अगर ये बिहेवियर चेंज होने का इम्कान है, तो फिर ये वाला कोड सूटेबल नहीं होगा हमारे लिए, फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैलर डक का ये एक्सपेक्टिंग कोई नई डक आएगी तो देखेंगे फिर क्या बिहेवियर होगा, लेकिन मैलर डक ने तो ऐसे ही करना है। तो इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ बिहेवियर किसी पर्टिकुलर
सिचुएशन में चेंज होने का इम्कान ना हो तो वहाँ पे इस तरह का कोड इज acceptable. So, but later in the book, we will have more patterns in our toolbox that can help us to fix it. Take a moment to think about how you would implement a duck so that its behavior could change at runtime. तो अभी इसको फिलहाल कबूल करें, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कैसे बिहेवियर असाइन कर रहे हैं, ये इस वक्त ये हमें समझने की जरूरत है। ओके, नाउ सी द कंप्लीट कोड ऑफ डक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको पहले हमने बिट्स एंड पीसीज में देखा है, अब पूरा कोड देखें। ये है एब्स्ट्रैक्ट डक क्लास। इसके अंदर हमने दो बिहेवियर के रेफरेंसेस डाले, फ्लाई बिहेवियर, क्वैक बिहेवियर रेफरेंस डाला। डक का कंस्ट्रक्टर है, डक के कंस्ट्रक्टर में हमने कोई कुछ नहीं डाला, ब्लैंक छोड़ दिया इसको। देन देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले मेथड जो कि सारी की सारी डक सुपर जो डक की कंक्रीट क्लासेस होंगी वो इम्प्लीमेंट करेंगी डिस्प्ले को। देन कम्स परफॉर्म फ्लाई एंड परफॉर्म क्वैक। परफॉर्म फ्लाई में हम ये कर रहे हैं कि इस फ्लाई बिहेवियर रेफरेंस के अगेंस्ट हम वी आर कॉलिंग अ फ्लाई मेथड। So we are basically delegating fly behavior, fly method, tasking a fly to fly behavior reference, and quack behavior to quack behavior reference. So we are performing some delegation, whereas the swimming, each swim method, all the ducks are swimming, so we are implementing swim in the super class once for all. तो एक ही स्विम इम्प्लीमेंटेशन है, ऑल डक्स फ्लोट, ऑल इवन रिक्वायर्स। तो ये है एक तरह का कोड रीयूज बाय इनहेरिटेंस। हम किसी भी चाइल्ड क्लास में, डक क्लास में स्विम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ऑल आर स्विमिंग, सो इट इज just we are implementing it once in the super class, so it is a code reused by inheritance. I hope this code is now even वो अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब फ्लाई बिहेवियर की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये इंटरफेस है, फ्लाई बिहेवियर का इंटरफेस है। इट इज हैज अ सिग्नेचर ऑफ फ्लाई बिहेवियर, नो इम्प्लीमेंटेशन। Then there is a class fly with wing which is implementing the above interface, and here we are implementing the fly. I am flying, and no flyway is also implementing the same interface, and it is saying I can't fly. Similarly, quack behavior, there is an interface quack behavior with the signature of quack behavior. There is a quack class implementing this behavior, and it is implementing the quack method with quack. Mute quack is implementing quack with silence, and squeak is implementing the quack behavior with squeak. So this is implementation of quack behavior. अब ये सारी पूरा क्लास स्ट्रक्चर बन गए हमारे। एक डक का स्ट्रक्चर है, एक एक बिहेवियर स्ट्रक्चर है, एक क्वैक स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास फ्लाई स्ट्रक्चर है। अब इनको सब यूज कैसे करने हैं? सो लेट मी शो यू इन द एडिटर। Okay, let me, sorry.
ओके जी, ये आपको एक्लिप्स नजर आ रही है, कोड नजर आ रहा है? यस सर। Okay, so this is the main method. In first line, we are creating an instance of MailerDuck. इंस्टेंस इसमें आ जाएगा, ठीक है। स्टेप ओवर, ये MailerDuck का जब इंस्टेंस हम जैसे ही क्रिएट करेंगे तो इसमें इसको हम असाइन कर देंगे क्वैक बिहेवियर और फ्लाई विद विंग बिहेवियर, जो कि उसका रेफरेंस है क्वैक बिहेवियर और ये वाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे MailerDuck को एक फ्लाई विद विंग का ऑब्जेक्ट आ गया इसके पास और एक क्वैक का ऑब्जेक्ट आ गया इसके पास, MailerDuck के पास। नाउ MailerDuck हैज टू बिहेवियर्स, वन इज फ्लाई विद विंग एंड अदर वन इज क्वैक। ये कैसे हुआ? ये इसके कंस्ट्रक्टर में हुआ। सो नाउ वी हैव अ MailerDuck and along with its behavior, इसका बिहेवियर अवेलेबल है। अब हम MailerDuck को कहते हैं अगली लाइन में परफॉर्म फ्लाई। ये परफॉर्म फ्लाई पे आया, ये परफॉर्म फ्लाई किया तो परफॉर्म फ्लाई ने क्या करना है कि ये फ्लाई विद विंग का फ्लाई कॉल करना है, क्योंकि फ्लाई बिहेवियर में पड़ा हुआ क्या पड़ा हुआ है? फ्लाई विद विंग पड़ा हुआ है। और अब ये जो फ्लाई मेथड कॉल हो जाएगा, फ्लाई विद विंग वाला मेथड कॉल हो जाएगा। सो ये फ्लाई विद विंग क्लास में आ गए हम, इसके अंदर फ्लाई मेथड पड़ा है। नाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट आई एम फ्लाइंग विद विंग, ये लिखा हुआ आ गया नीचे, आई एम फ्लाइंग विद विंग। Okay, now next is it is delegating perform quack, ये भी MailerDuck का परफॉर्म quack कॉल होने लगा। ये परफॉर्म quack कॉल होगा तो ये quack का ऑब्जेक्ट का quack कॉल होगा। quack क्लास का ऑब्जेक्ट है, quack क्लास का quack कॉल होगा। ये quack क्लास में आ गए, quack क्लास में इसका it is going to write implement calling the quack of quack class, और ये लिखा हुआ आने लगा है हमारे पास quack। okay, now third step, MailerDuck is calling the display। MailerDuck ने हर कंक्रीट क्लास ने अपना अपना डिस्प्ले इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड। So you are in a MailerDuck and its display is going to be called, लिखा हुआ आ गया है real MailerDuck। Now it is going to call swim। Swim is implemented in the super class duck। अब ये उसका swim कॉल होगा क्योंकि इसने अपना swim ओवरराइड नहीं कराया हुआ, अपना swim नहीं लिखा हुआ, तो ये अब कौन सा कॉल हो जाएगा? सुपर क्लास का swim कॉल होगा। So this is our duck abstract class, इसका swim कॉल होने लगा, I am swimming। ठीक है जी, तो ये आपने MailerDuck का हमने देखा कि परफॉर्म फ्लाई कॉल हुआ, आई एम फ्लाइंग, परफॉर्म क्वैक, क्वैक लिखा हुआ आया, फिर डिस्प्ले कॉल किया जो कि इसका अपना इम्प्लीमेंटेड था MailerDuck में, वो आ गया, फिर स्विम कॉल हुआ जो कि सुपर क्लास ने कॉल किया था। सो you can see all type of stuff here in these 4 statements। Now let's see decoy duck। We are going to create object of decoy duck। decoy duck का अगर हम कंस्ट्रक्टर चेक करें, इसको मैंने ब्रेक
पॉइंट नहीं लगाया था, तो इसमें इसको म्यूट कोएक का ऑब्जेक्ट इसको असाइन हो गया। और अगर डिक्वायर डक को खोलूंगा मैं तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा एक फ्लाई बिहेवियर में नो फ्लाई वे का ऑब्जेक्ट असाइन हो गया इसको, और क्वैक में म्यूट क्वैक का ऑब्जेक्ट असाइन हो गया इसको इन द कंस्ट्रक्टर। Now it is we are going to call perform fly. Perform fly कॉल करेंगे तो it is going to call fly no way fly method of fly no way object. ये fly no way में आ गया। Now it is going to write I can't fly. Here it is. Now it is going to call decoy duck dot perform quack. So it is delegating. It is calling the quack method of mute quack class, behavior class. So it is going to print this is mute quack and quack method of mute quack. It is going to print silence. Okay, so it ends. Sorry. Okay. So this ends the demo. इसको मैंने कोड आपको रन करके दिखा दिया। ओके, तो इससे हमें अब सारा कोड इन एक्शन आपने देख लिया डीबग मोड में कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट मेथड्स कॉल हो रही हैं। सर ये आप अपलोड भी कर दिएगा लेक्चर के साथ। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये अपलोड कर दिएगा एलएमएस पे ना, लेक्चर जब आप अपलोड करेंगे। हाँ, लेक्चर तो अपलोड करूंगा ही मैं, साथ ही कोड भी अपलोड करूंगा। कोड भी आप खेल के देखें इस कोड के साथ, ठीक है? थैंक यू सर। चलें, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। नाउ वी कैन आल्सो सेट द बिहेवियर डायनेमिकली। कैसे? फॉर एग्जांपल हम किसी वी कैन ऐड टू मेथड्स हियर। डक के अंदर हमने डक की जो सुपर क्लास है इसमें हम दो मेथड ऐड कर दें। अगर सेट फ्लाई बिहेवियर, तो अगर अब तो ये हो रहा है ना कि हम ऑब्जेक्ट जो उसको जो बिहेवियर असाइन कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर में असाइन कर रहे हैं। वंस ऑब्जेक्ट्स डक ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, उस वक्त हम बिहेवियर असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और रन टाइम में उसका बिहेवियर हमने चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो ईजी। तो हम ये वी कैन क्रिएट टू मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल सेट फ्लाई बिहेवियर एंड सेट क्वेक बिहेवियर। ये इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी कि सेट फ्लाई बिहेवियर में जो ये डक के रेफरेंस है, ये फ्लाई बिहेवियर का जो रेफरेंस नजर आ रहा है आपका, यहाँ पे हम सेट करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। हम ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे उसका, इसका रेफरेंस जो पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है सेट बिहेवियर से हम उसका जो पहले ऑब्जेक्ट दिया था उसको रिप्लेस कर देंगे किसी डिफरेंट बिहेवियर के साथ। इस तरह क्वेक में भी जो ओरिजिनली कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट असाइन किया था उसके बजाय हम कोई और असाइन कर देंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेट्स अब फॉर एग्जांपल हम वी आर इन अ मेंटेनेंस फेज। एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी एक जनाब एग्जेक्टिव ने कहा एक हफ्ता पहले जी एक मॉडल डक बनाए आप। मॉडल जो डक जो है वो फ्लाई नहीं करेगी लेकिन वो क्वैक करेगी। तो हम अब हम क्या करेंगे, हम नया एक नई कंक्रीट डक बना रहे हैं। नई कंक्रीट डक बनाएंगे हम, उसका नाम रख दिया हमने मॉडल डक। जब हम नई डक बना रहे हैं तो हमें पुरानी कोई भी कोड रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बाकी पहले ऑलरेडी बनी हुई है हमारी कंक्रीट डक क्लासेस, उनको हमें रिविजिट करने की, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है उस कोड को। हमने सिंपली, हमें रिक्वायरमेंट आई है नई
कि ये एक नई डक बनानी है मॉडल डक, तो हम क्या करेंगे, एक नई क्लास बना देंगे मॉडल डक की, एंड इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड द डक। बिहेवियर हमें बता दिया गया, एग्जेक्टिव ने हम कहा है कि जी ये जो मॉडल डक है ये फ्लाई नहीं करेगी लेकिन क्वेक करेगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसके कंस्ट्रक्टर में फ्लाई नो वे असाइन कर देना है इसको, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने इसको क्वैक असाइन कर देना है, क्वैक बिहेवियर को, और इसके डिस्प्ले मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, आई एम अ मॉडल डक, एंड दैट्स ऑल, अ न्यू फंक्शनैलिटी इज देयर। ठीक है, तो हमने ना तो किसी बिहेवियर क्लास को चेंज किया, ना हमने किसी पुरानी डक क्लास को चेंज किया, सिंपली हमने एक नई क्लास बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसको हमने चाइल्ड बना दिया डक का, तो बाकी सारी गेम उधर की उधर ही है। So you can see the benefit of this concept during maintenance phase once software is required to be changed. Similarly, ये रिक्वायरमेंट भी आ सकती है, कोई नया बिहेवियर बनाने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव ने कहा जी ये एक तो फ्लाई बिहेवियर तो होता ही है, कोई नया बिहेवियर लाएं आप, तो कहते हैं जी रॉकेट पे डक बैठ के तो चांद पे जाएगी, ये आप बिहेवियर ऐड करें। तो सिंपली हमने क्या करना है कि एक फ्लाई नया, वी जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू फ्लाई बिहेवियर। हम कहते हैं जी नई क्लास हम बना देंगे, फ्लाई रॉकेट पावर्ड फॉर एग्जांपल, एक क्लास बना दी हमने सही नई, और इट विल इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, और इसका फ्लाई हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, आई एम फ्लाइंग विद रॉकेट। तो एक नया बिहेवियर क्लास ऐड कर दी, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू revisit any of the code of any existing class, उसके किसी फ्लाई बिहेवियर को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हम नया कोड अपना प्लग इन कर देंगे बीच में। और नाउ हाउ कैन वी चेंज द बिहेवियर डायनेमिकली। अब ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो सिमुलेटर है उसमें मैं कहता हूँ जी एक मॉडल डक बनाई थी मैंने, तो मॉडल डक अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है मैंने, तो मेन मेथड में आई एम गोइंग टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ मॉडल डक। अब मैंने उसको परफॉर्म फ्लाई करवा दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी इसका मैंने फ्लाई बिहेवियर चेंज करना है। मॉडल का ओरिजिनली फ्लाई बिहेवियर क्या था कि मॉडल डक फ्लाई कर सकती है, क्या था हमने याद है क्या किया था हमने, नहीं इसको कर क्या साइन किया था मॉडल डक को, नॉट फ्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, फ्लाई मॉडल डक फ्लाई नहीं कर सकती। तो अब ये मॉडल डक जब हमने परफॉर्म फ्लाई करेंगे तो मॉडल डक कहेगी जी मैं तो नहीं फ्लाई कर सकती। अब हमने कहा नहीं नहीं यार इसको फ्लाई करवाना है हमने, ठीक है, हमने कहा तो रॉकेट पे बिठाते हैं, तो हमने इसका बिहेवियर चेंज कर दिया, न्यू फ्लाई रॉकेट पावर्ड, हमने रन टाइम में उसका उसका जो है ना बिहेवियर चेंज कर दिया। अब हम जब दोबारा परफॉर्म फ्लाई कॉल करेंगे तो ये पहले पहले आ रहा था आई कांट फ्लाई, नाउ इट विल बी आई एम फ्लाइंग विद अ रॉकेट। तो ये वी कैन इजीली चेंज दिस बिहेवियर। ये मैं आपको मॉडल डक का भी कोड दिखाता हूँ, मॉडल डक सिमुलेटर। ये फॉर एग्जांपल मॉडल डक है, मॉडल डक को ये इंस्टेंस क्रिएट किया, तो मॉडल डक को एक फ्लाई बिहेवियर फ्लाई नो वे और क्वैक बिहेवियर क्वैक असाइन हो गया, ठीक हो गया, इसके रेफरेंस आ गया इसके पास। अब मॉडल डक डिस्प्ले हम करेंगे तो डिस्प्ले में आई एम अ मॉडल डक लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि नई क्लास हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये आई एम अ मॉडल डक लिखा हुआ आ गया। इसके बाद आप परफॉर्म फ्लाई कराने लगे हैं तो ये लिखा हुआ आ जाएगा आई कांट फ्लाई, ये फ्लाई बिहेवियर असाइन होने लगा इसको, एंड नो फ्लाई वे असाइन किया था इसलिए आई कांट फ्लाई लिखा हुआ आएगा।
इसके बाद परफॉर्म क्वैक करेंगे तो ये क्वैक लिखा हुआ आएगा बिकॉज क्वैक बिहेवियर हैज बीन असाइंड टू इट। ये क्वैक लिखा हुआ आ गया। इसके बाद वी आर चेंजिंग इट्स बिहेवियर, इसका फ्लाई बिहेवियर चेंज करने लगे हम। सेटिंग न्यू बिहेवियर, हम कहते हैं जी सेट फ्लाई बिहेवियर टू न्यू फ्लाई पावर्ड। तो सेट फ्लाई बिहेवियर पे मैं देख लूं मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है कि नहीं लगा हुआ। स्टेप ओवर, तो ये सेट फ्लाई बिहेवियर में देखें हमें जो है ये फ्लाई फायर पावर्ड का ऑब्जेक्ट असाइन होने लगा है इसको। ये आई फ्लाई बिहेवियर को ये फ्लाई रॉकेट पावर्ड असाइन होने लगा है इसको। ये असाइन हो गया इसको मॉडल डक को, तो आप देखेंगे इसका फ्लाई बिहेवियर फ्लाई पावर्ड हो गया है, जबकि दूसरा क्वैक बिहेवियर वही है। ये बिहेवियर चेंज हो गया इसका। नाउ अब हम परफॉर्म फ्लाई कराएंगे तो इसमें आ जाएगा आई एम फ्लाइंग विद रॉकेट। ये आ गया फ्लाइंग विद रॉकेट, चेंज हो गया बिहेवियर। एंड फॉर्म क्वैक करेंगे तो वही रहेगा पुराना वाला ही बिहेवियर। नहीं, इसका हमने वो बिहेवियर भी चेंज किया है, वो बिहेवियर भी चेंज किया हमने, स्क्वीक कर दिया है बिहेवियर। ओके ये देखें यहाँ पे इसको क्वैक बिहेवियर भी हमने यहाँ पे नया दिया है, स्क्वीक कर दिया है, तो इसको स्क्वीक लिखा हुआ आ गया। So it's a in a nutshell it's a very powerful behavior or a good designer thinks in this way. So let me conclude with a big picture. जो भी अभी हमने देखा है, let's see the bigger picture, how what we have seen so far. Okay, so a bigger picture of encapsulated behavior. पहले तो ये देखें कि we have established has a relationship between duck and encapsulated fly behavior and with duck and encapsulated quack behavior. Behaviors are encapsulated under interfaces, दोनों encapsulated हैं और इनके हमने we have kept a reference has a relationship create किया हमने interfaces के साथ. So duck has only knowledge of the interface, not any concrete class. So we are following the principle of program to interface here. Similarly, we are also making use of is a relationship, which is inheritance. तो कुछ हद तक हमने inheritance का फायदा उठाया है, जैसे हमने swim behavior है, swim functionality जो कोड रीयूज कर रहे हैं वो इज अ बिहेवियर की वजह से कर रहे हैं, लेकिन फ्लाई और क्वैक के लिए हम हैज अ रिलेशनशिप से कोड रीयूज कर रहे हैं. सो कोड रीयूज इज पॉसिबल विद इनहेरिटेंस एज वेल एंड कोड रीयूज इज पॉसिबल विद द हैज अ रिलेशनशिप. हैज अ रिलेशनशिप इज सिंपली एन एसोसिएशन. जब हम एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं यूएमएल में तो हम हैज अ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं. जब हम जनरलाइजेशंस यूज कर रहे होते हैं तो हम इज अ रिलेशनशिप यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. और इंटरफेसेस जो यूज कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये हो गई. नाउ वी कैन थिंक ऑफ दीज बिहेवियर्स एज एल्गोरिदम्स. थिंक ऑफ ईच ऑफ सेट ऑफ बिहेवियर्स एज फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स. हम रन टाइम पे एल्गोरिदम्स चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये एक एल्गोरिदम है, ये एक एल्गोरिदम है, तो हम रन टाइम पे वी हैव कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप कोई गेम्स बनाना चाहते हैं तो हमने अगर राइट
फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट की गेम है, तो आप कहते हैं राइट टर्न, तो राइट टर्न का बिहेवियर असाइन हो जाए रन टाइम पे, लेफ्ट टर्न करें तो लेफ्ट टर्न का बिहेवियर असाइन हो जाए. So all these things can be, behaviors can be changed at runtime. Then these algorithms are interchangeable. Interchange का भी हमने देख लिया concept. Clients make use of an encapsulated family of algorithms for both flying and quaking. तो family of algorithm भी हमें नजर आ गया. तो you can see this is a bigger picture. दैट इस बिहेवियर्स को हम एल्गोरिदम, फैमिली ऑफ एल्गोरिदम भी कह सकते हैं. ये अगर हम ऑब्जेक्ट 8 पे क्लास डायग्राम क्रिएट करें तो इस किस्म का क्लास डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं आप. सीक्वेंस इसी तरह अगर हम विजुअल स्टूडियो में अगर वी कैन इजीली 10% कोड को चेंज करके हम C# का इक्विवेलेंट कोड बना सकते हैं. थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करें, ज़्यादातर लॉजिकल कोड एज इट इज़ यूज हो जाएगा आपका, और थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी सिंटैक्स की, तो आप यू कैन क्रिएट एन इक्विवेलेंट C# कोड. और C# में मैंने जैसे आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो 2012 में यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आप क्लास डायग्राम जनरेट कर सकते हैं, आप सीक्वेंस डायग्राम जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज क्लास डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ विजुअल स्टूडियो. आप इसमें यहाँ पे गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, क्या चीज़ है ये जो गोल गोल सर्कल नजर आ रहे हैं? What is this? Interfaces प्रोवाइडेड इंटरफेस. ठीक है, क्योंकि ये फ्लाई बिहेवियर इंटरफेस है, तो ये दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग, जो इम्प्लीमेंट करती हैं क्लासेस वो प्रोवाइड करती हैं UML के लैंग्वेज में. इस these classes are providing Quag behavior interface. These 3 classes are providing fly behavior interface, and this is whole Doug class structure. इसी तरह okay, has a can be a better, has a can be better than is a. अभी हमने देखा has a relationship, is a relationship. एक डिजाइन प्रिंसिपल है फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, एंड कंपोजिशन इज नथिंग बट हैज अ रिलेशनशिप, and inheritance is nothing but is a relationship. So it is our third design principle. Has a relationship is an interesting one. Each duck has fly behavior and a quack behavior to which it delegates flying and quacking. When you put two classes together like this, you are using composition. You are composing उनके अपने जो ऑब्जेक्ट हैं, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट, उनको कंपोज किया हुआ है डक ने, तो इसलिए हम इसे कंपोजिशन भी कह सकते हैं. इंस्टेड ऑफ इनहेरिटिंग देयर बिहेवियर, द डक्स गेट देयर बिहेवियर बाय बीइंग कंपोज्ड with right behavior object. This is an important technique. In fact, we have been using our third design principle, and it is favor composition over inheritance. अब ये देखें, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो गैंग ऑफ 4 बुक में लिखे हुए हैं. इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ओनली यूज कंपोजिशन और डोंट यूज इनहेरिटेंस. जब आपके पास चॉइसेस होंगी कंपोजिशन और इनहेरिटेंस की, तो आप उसको फेवर करें कंपोजिशन को, क्योंकि कंपोजिशन गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन. लेकिन इनहेरिटेंस कई जगहों पे जहाँ पे आपकी कोड चेंजेस एक्सपेक्टेड है, कोड आपका फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है, वहाँ पे इनहेरिटेंस वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव. लेकिन जहाँ पे कोड चेंजेस आ रही हैं तो वहाँ पे कंपोजिशन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी. इसलिए जैसे जो था, जो का हमने केस स्टडी में देखा कि जो इनहेरिटेंस को फेवर कर रहा था, तो हमें ये केस स्टडी ये बताती है कि हमें कंपोजिशन को फेवर करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस में कंपोजिशन जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है. लेकिन इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो आपका कोड जल्दी जल्दी लिख लेंगे. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनहेरिटेंस वगैरह करके तो आप जल्दी से एप्लीकेशन जल्दी बना लेंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म में आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी. शुरू में तो आप जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म कर देंगे. तो अगर कोड खुद मेंटेन भी करना है तो फिर
फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। कोड किसी और के हवाले करना है, फिर आपकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का काम आ जाएगा, लेकिन खुद ही करना है तो फिर तो ध्यान रखें फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट पैटर्न। You just applied your first design pattern, the strategy pattern. That's right. You use the strategy pattern to rework Simuduck application. Thanks to this pattern, the simulator is ready for any changes those executives might cook up on their next business trip to Vegas. Now, Joe is not in tension. Now that we have made you take long road to apply it, here is the formal definition of this pattern. Strategy pattern की formal definition क्या है? It defines a family of algorithms, encapsulates each one, and makes them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from clients that use it. ठीक है, जिस एल्गोरिदम को रिप्लेस करना है रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई नए एल्गोरिदम डालने हैं वो भी डाल सकते हैं। Use this definition when you need to impress your friends and influence key executives. ठीक है जी, जो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, this will help you. Okay, this is generic structure of strategy pattern. हम कहते हैं जी एक कॉन्टेक्स्ट होता है और कॉन्टेक्स्ट कंपोजेस द इंटरफेस, स्ट्रेटजी इंटरफेस। तो हमारी केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में duck was the context and any of one set of strategy behavior, for example fly, जैसे हमने दो behavior यूज किया तो हमारा दो compositions हो गई, दो strategy हो गई हमारी। एक strategy हमारी fly की थी और एक strategy हमारी quack की थी। तो ये एक strategy हम शो कर रहे हैं कि context composes a strategy interface and there would be some method for that strategy, for execution of that strategy, that will be abstract, and then each strategy will have their own method implementation. Okay, so with Object8 you can generate various sequence diagrams. आप इसको एनालाइज कीजिएगा अपने टाइम पे, कोड को किस तरीके से कोड चल रहा है। मैं अभी इसको लाइव डेमो इसको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इसका लाइसेंस ख़त्म हो गया। एंड विजुअल स्टूडियो इज़ फ्री। आई विल गिव यू रेफरेंस ऑफ विजुअल स्टूडियो 2012 अल्टीमेट एडिशन। आप उसको डाउनलोड करें और उस पर ये सीक्वेंस डायग्राम बना के देखें। सो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जूम करके आपको नज़र आ रही है, रिटर्न टाइप नज़र आ रही है। well, इसको थोड़ा सा खुद एनालाइज करेंगे, यू विल गेट एक्सपर्टी ऑन सीक्वेंस डायग्राम एंड यू विल आल्सो गेट एक्सपर्टी ऑन द कोड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, दिस इज अ वीडियो स्टूडियो पार्शियल व्यू। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल व्यू है, मेलोडक है, ये क्वैक बिहेवियर है, फ्लाई विंग बिहेवियर है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये क्लियर है। मैं थोड़ा सा उसका पिछली डायग्राम का एक छोटा सा चंक उठा के आपको दिखा रहा हूँ। पार्शियल डायग्राम। Visual Studio also has a dependency graph. Look here how I have made this graph. This is a context. This duck hierarchy is creating a context. This fly strategy and quack strategy external. So it's a very useful diagram. We call it dependency graph. या बना सकते हैं कैसे कॉल इसको कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। Okay, then Visual Studio also has a code matrix.
ये भी जनरेट हो जाती है इसमें। आप इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स कितना है, ये देखें कितना ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि हमने डिज़ाइन बेटर इम्प्लीमेंट किया तो बहुत अच्छा मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स शो कर रहा है। कम्प्लेक्सिटी 1 2 बहुत कम है। इनहेरिटेंस की लेवल भी बहुत कम है। कपलिंग भी काफ़ी कम है। मेलर डक और मॉडल डक की 6 तक गई है, बाकी 6 से कम है। लाइन ऑफ कोड भी शो कर रही है। अगेन वेरी यूजफुल टूल। तो ये विजुअल स्टूडियो आपने लाजमी, बल्कि मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको, आप इसको करें। ये बड़े अच्छे टूल्स हैं, इसका आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी आने चाहिए आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। Okay, let's see homework, but I'll convert it into the assignment. वैसे ही नस कह रही है हमें डिपार्टमेंट वाले के असाइनमेंट दें, तो होमवर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू असाइनमेंट। ठीक है, व्हाट इज योर होमवर्क? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू असाइनमेंट वंस अगेन। रन अ कोड टू अंडरस्टैंड इट। एनहेंस कोड मैं आपको दूंगा। Enhance strategy pattern code as follows. Create a new group of behavior, dance behavior, with following variations: Khatak dance, Bhangra dance, Sindhi dance, Bloch dance. ठीक हो गया जी? Create a new duck, Pakistani duck. In main, to start with, Pakistani duck should perform Khatak dance. Later on, at run time, its dance should change to next 3 dances, and then program should exit. Convert the original Java code to C# code and experiment on Visual Studio. Visual Studio का भी रेफरेंस दूंगा डाउनलोड का आपको। Homework 2. Consider binary math operation as a binary strategy. Consider add, subtract, multiply as concrete strategies, any one of which can be chosen by client through a context. Having common interface, execute binary operation. ये method होगा to perform the desired operation without changing set of strategy classes और कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपने प्लस करना है माइनस करना है वो आपने डिसाइड करना है मेन मेथड में, और अब प्लस है तो एग्जीक्यूट बाइनरी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करना है तो एग्जीक्यूट बाइनरी करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेवलप अ जावा एंड C# कोड, शो सैम्पल कंसोल आउटपुट फॉर वेरिफिकेशन। इसको मैं नैरेटिव बनाऊंगा असाइनमेंट का, वो अपलोड करूंगा। ठीक है जी। सो इट एंड्स लेक्चर 8। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस टुडेज लेक्चर। एनी क्यूरीज? सर असाइनमेंट की डेडलाइन कब है? आप बताएं जनाब, आप हुक्म करें क्या डेडलाइन दी सर जाए। ये ईद नेक्स्ट वाला दिन मंथ की दे रखें। दें? ईद वाला दिन ठीक नहीं है? नहीं सर नेक्स्ट मंथ रखें सर, बहुत ज़्यादा काम है। नेक्स्ट मंथ, ताकि मैं असाइनमेंट ही ना दूँ। वो डिपार्टमेंट मुझे कह रहे हैं असाइनमेंट दें, आप नेक्स्ट मंथ की बातें कर रहे हैं। सर पेपर भी करना है सर, उसकी दूसरी सबमिशन भी आ रही है, तो सर देखें थोड़ा। पेपर की कब सबमिशन आ रही है? सर अभी फर्स्ट सबमिशन तो इस संडे को है, उसके बाद फिर 2 वीक्स के बाद मेरी 2 सबमिशन वीक्स है। के 2 वीक्स के बाद है? सर बहुत ज़्यादा काम है सर उसके अंदर। अभी काफ़ियों का तो सर R3 R4 I5 ही चल रहा है सर, R7 पे तो अभी बहुत थोड़े लोग हैं। अच्छा, मैं वैसे असाइनमेंट कम मैं इसलिए देता हूँ प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन ये असाइनमेंट, दिस असाइनमेंट वुड बी वर्थ, क्योंकि आपका बहुत अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो पे भी और इस पर। ये असाइनमेंट लाजमी करनी है। चलो मैं देखता हूँ वो भी है। आई विल ट्राई टू अकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, आपके मशवरे से चलेंगे, लेकिन ये असाइनमेंट करने हैं आपने, क्योंकि ये आपको दुआएं देंगे मुझे आप। ठीक हो गया जी? ओके जी। और कुछ एनी अदर क्वेरी? बस सर यही है सर, इसी को कंसीडर करें, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सही है। चलें जी, ठीक है फिर। ओके, अब मेरे ख्याल है ईद के बाद ही हमारी मुलाकात होगी।
सर इंशाल्लाह ईद के तो बाद आपके लिए क्विज है, ईद के बाद वेरी नेक्स्ट क्लास में क्विज है। क्विज को आई थिंक वी कैन कन्वर्ट इट टू असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट कर लेंगे तो क्विज का नेमल बदल हो जाएगा, क्या ख्याल है? जी सर, बेहतरीन है सर। चलिए देखते हैं। ऐसे क्विज नेक्स्ट मंथ तो खैर बहुत ही आगे हो जाएगा, लेकिन देखते हैं बीच में क्या मुमकिन है। क्या ठीक है? ओके तो और कुछ? तो आपके जनाब एडवांस ईद मुबारक पहली बात। और बाकी इंशाल्लाह फिर चलते रहेंगे अल्लाह का नाम लेके। तो अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर।